Anurag ji, some statistics first. Nearly 97 crore people are registered to vote in the forthcoming elections, and 1.85 crore are in the age group of 18 to 19, and this is as per the Election Commission of India. That's the reason we are holding this conclave, which is the Yuva conclave, and who better to start this conclave than the Union Minister who's supposed to represent the youth and sports affairs, Anurag Thakur. Thank you so much and welcome to this conclave of NDTV. You have been a Union Minister for several years now. If I may ask you, what is it to work with the Prime Minister? How has your experience been? Aapka anubhav kaisa raha? I think most of the people out here, they have their bosses. Even Maria, you have a boss. Yes. But let me tell you, my boss, Prime Minister Narendra Modi, is the best. What makes him best? He is the strictest at work, but he is the kindest when it comes to Bhartiyas, when it comes to the citizen of India. Look at the pro-people policies of Prime Minister Modi. He has worked day and night in the last 10 years, committed every single minute of his life towards the nation building and pro-poor policies and taking the country to the next level. And that is why, because of the pro-poor policies, 25 crore poor people have come out of the multi-dimensional poverty line, which others couldn't do in 60 years. Prime Minister Modi delivered that in 10 years. That is how I say my boss is the best. And does your boss give you free time? Because all of you are campaigning on weekends, you're busy every Saturday, Sunday. You don't have a weekend off. Well, if you have a boss who have not taken a single holiday in last 23 years, he is Chief Minister since 2001, then he took over as a Prime Minister in 2014. And you have seen when his mother passed away, even that day, after the funeral, he just took 2 hours at the funeral and he again started working for the country. That is the kind of commitment Prime Minister has today. And that is what inspires people like us to work day and night. I was in Jammu, Udhampur yesterday, just landed straight into your program. After this, we have back-to-back meetings, then another conclave in the evening, then to Jammu and Kashmir, then again to Lucknow. Yeah, so we are grateful आप आए हमारे मंच पर अनुराग जी चर्चा युवाओं का मंच और मैं ना हूं मना नहीं कर सकता इसीलिए मुझे लगा कि क्योंकि युवाओं का मंच है और आपको आना तो जरूरी था और इनॉग्रल सेशन है तो युवा क्या है आपके लिए युवा का मतलब क्या है वेल युवा मेरे लिए पॉजिटिव एनर्जी है जो सामने दिख रही है इस हॉल में एंटर करते जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको आती है युवा का मतलब है इंस्पिरेशन, युवा का मतलब है पैशन, युवा का मतलब है मोटिवेशन, युवा का मतलब है इनोवेशन, युवा का मतलब है एम्पावरमेंट, युवा का मतलब है डेवलपमेंट, युवा का मतलब है कमिटमेंट, युवा का मतलब है ग्रोथ। और युवा का मतलब जब मैं कमिटमेंट की बात करता हूं तो हमारे देश का युवा इतना कमिटेड है कि 10 साल में देश जो पहले स्टार्टअप में कहीं नहीं था आज युवा की कमिटमेंट के कारण दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप बन गया है एंड लेट मी शेयर दिस एग्जांपल विद यू आई एम जम्मू yesterday during the event, post the event, even during the evening event. A lot of youngsters even in Jammu who met me who are working, some are working in the field of cyber security, some are in the field of aviation to others. And many of them, they have startups in the field of agriculture to horticulture. And some are looking at the space sector. You know, a few years back, we couldn't even think about the space sector. Today, when we open it up for the startups, we already have more than 1,600 startups in the space sector and also have hundreds of startups in the agriculture and agriculture allied services sector. Look at the people who have come forward as a startup with the drone manufacturing. Garuda is one of them. And now they have thousands of drones manufacturing capacity today. That is how they are shaping the future of India. So मेरे लिए युवा कुछ लोग तो ऐसे हैं जो
मैं आपको, आप पत्रकार आपकी और नहीं कह रहा, कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो एक नेता को देश में उसको 20 सालों से युवा ही कह रहे हैं। लेकिन युवा क्या उम्र के साथ है केवल? मैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखता हूं तो चाहे 12,000 फीट की हाइट केदारनाथ पर वो तपस्या कर रहे हों, साधना में बैठे हों, या फिर तेजस जैसे फाइटर जेट को हवा में उड़ा रहे हों, या डीप सी डाइविंग कर रहे हों, या 11 दिन का अनुष्ठान बगैर एक अन्न का दाना ग्रहण किए कर रहे हों, या 9 दिन नवरात्रों के समय भी बगैर कुछ अन्न ग्रहण किए विदेश यात्रा से लेकर स्वदेश में काम कर रहे हो, युवा तो आपकी सोच में है, आपके काम में है। क्योंकि आपने अभी स्टार्टअप्स बताया कि इतने सारे स्टार्टअप्स खुले हैं हिंदुस्तान में, तो ऑपोजिशन को नौकरी क्यों नहीं दिख रही? ऑपोजिशन का सवाल है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट पे ध्यान नहीं दे रहे। अब कुछ लोगों को झूठ बार बार बोलने की आदत है, उनको लगता है यही सच हो जाएगा, सत्य नहीं है। मैं आप सबके उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले 12 महीनों में 10 लाख सरकारी नौकरी मोदी सरकार ने दी है, सरकारी नौकरी। अगर आप ईपीएफओ के अकाउंट्स देखेंगे, जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की हम बात करते हैं, तो उसमें 6 करोड़ 40 लाख नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ई श्रम कार्ड की बात करूं तो 29 करोड़ 29 करोड़ ई श्रम कार्ड मिले हैं। हमारे यहाँ पे लगभग 93% 93% इनफॉर्मल सेक्टर था, जो अब मोर या अनऑर्गेनाइज सेक्टर आप कह लीजिए, जो अब और ऑर्गेनाइज्ड होता चला जा रहा है। आप देखिए, कोविड के समय जब दुनिया ये कहती थी भारत का एमएसएमई सेक्टर बंद हो जाएगा, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ मारिया जी। हमने 6 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड बैंकों के माध्यम से दिया एमएसएमई को, ताकि लोन लेट वापस कर सकें, किश्त ना दें। फिर हमने उनको 20% एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के माध्यम से। लगभग 4 लाख करोड़ रुपए हमने बगैर ब्याज के पैसा दिया, जिसके कारण आज हमारी एमएसएमई इंडस्ट्री और ताकतवर खड़ी हुई और रोजगार देना शुरू किया। इसके अलावा हमने लगभग 34 करोड़ 34 करोड़ हमने मुद्रा लोन दिए, बगैर घर बगैर जमीन गिरवी रखे, और उनमें से 65% से ज़्यादा देश की महिलाओं को मिले हैं, ताकि वो अपने पांव पर खड़ा हो सकें, अपना रोजगार स्वरोजगार कर सकें। ये पहले नहीं था। तो आपको क्या लगता है 34 करोड़ लोगों को ऋण मिला होगा तो क्या वो काम नहीं दिख रहा है? अनुराग जी, ये दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग देखना नहीं चाहते हैं। जिस युवा की आप चर्चा कर रहे हैं वो तो बोलते हैं कि महंगाई भी बढ़ी हुई है, और ये भी उनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और आप लोग डेटा छुपा रहे हैं, सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। आप उसको युवा ही मान रही हैं? नहीं, आपने कहा था। मैं इतना कहूंगा, डेटा अगर आप उठाकर देखेंगे 2013 में जब हम सरकार में आए, 2014 में, उससे पहले अगर आप 1-1.5 साल का भी निकाल के देखेंगे तो कांग्रेस के समय 13% महंगाई दर थी, इन्फ्लेशन रेट वॉज 13%। आज कितना है? 5% और उससे नीचे है। आप एवरेज भी पिछले 5 साल का निकालेंगे तो 6% से कम नजर आएगा। आप पिछले 10 साल का निकालेंगे तो 5% 5.5% से कम नजर आएगा, जो ऑन एन एवरेज बहुत अच्छा है। दुनिया भर के देशों में जहां इन्फ्लेशन होती नहीं थी, यूएस से लेके यूरोप तक, जहां 1% महंगाई दर मुश्किल से होती थी, आज वहां पर 4-4 गुना महंगाई है। लेकिन कोविड के बावजूद भी महंगाई को नियंत्रण में रखा तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और हमने यहां पर गरीब को भी साथ में मुफ्त में अनाज 3 साल भी दिया है, और अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी ने दे दी है। आप स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक स्टार्टअप इंडिया कॉन्क्लेव भी हुआ था। प्राइम मिनिस्टर का एम्फेसिस है सेल्फ रिलायंस पर। तो ये क्या आपको लगता है कि एक हिंदुस्तान को अपने एक डेटा की ज़रूरत है? शायद वो जो एक इंडियंस का एटीट्यूड बदल रहा है कि पहले हम सोचते थे कि पहले सरकारी नौकरी हो जाए, अब जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं कि आपने जो जम्मू में जिस शख्स से मुलाकात की, वो अब चाहता है कि हम नौकरी देने वाले बने। निश्चित तौर पर ये 17 साल का युवा था जो साइबर सिक्योरिटी में काम करता है, और मैं उसकी नॉलेज देख के आई वाज सो इम्प्रेस्ड कि 17 साल के युवा में और एक टियर 2 सिटी में रहने वाले को अगर साइबर सिक्योरिटी पे इतना ज्ञान है, और कुछ लोग जो एविएशन सेक्टर पे एरोनॉटिक्स इंजीनियर बन के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है जो एयरबस बोइंग अब अपने
प्लांट्स यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लगा रहे हैं, हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में तेजस जैसे एयरक्राफ्ट से लेके हेलीकॉप्टर अपने बना रहे हैं। तो हमारे युवा आज बड़े शहरों से नहीं, छोटे शहरों से ज़्यादा स्टार्टअप्स के माध्यम से एक अपना इकोसिस्टम वहाँ पे खड़ा करने वाले हैं, जो बहुत बड़ी ताकत हमारी बनने वाली है। और मारिया जी, मेरी आप विश्वास मान के चलिए, भारत के युवाओं की क्षमता को वर्षों तक लोगों ने रोक के रखा था। अगर आज से 30 साल पहले हमारा स्पेस सेक्टर खोल दिया होता तो आपको गूगल मैप देखने की जरूरत ना पड़ती। इनमें से किसी युवा ने अपने यहाँ पर गूगल मैप से बड़ी कंपनी भारत में बनाकर खड़ी कर दी होती। मैं आपको छोटा सा उदाहरण कोविड-19 पैंडेमिक का देता हूँ। अमेरिका जैसा देश भी चेक लिख के देता रहा अपनी जनता को, वो भी आज तक हार्ड कॉपी आपके कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की देता है। सुंदर पिचाई ने मुझे पिछले साल जनवरी में कहा कि मैं आज तक हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट की लेके चलता हूं अपनी वैक्सीन के। जबकि भारत में आरोग्य सेतु ऐप पे आपको पता चला किसको कोविड से इन्फेक्शन है, कोविन ऐप पे आपको आपका कोविड का सर्टिफिकेट मिला जो आपने अपनी वैक्सीन लगाई। आज दुनिया के बहुत कम देश वो कर पाए जो भारत ने किया है, और भारत ने तो वो भी कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया था। चंद्रयान मिशन की सफलता दिखाती है कि हम चंद्रमा के साउथ पोल पे पहुंचने का कीर्तिमान भी स्थापित किया। ये भारत के बढ़ते कदम हैं। हमने जैसे स्टार्टअप सेक्टर को खोला स्पेस के लिए, विक्रम एस के नाम से आपने सुना होगा, रॉकेट लॉन्च किया। कैसे संभव हो पाया? 108 सैटेलाइट हमने एक साथ लॉन्च करने का काम किया। आज भारत में इतनी संभावनाएं बनी हैं। स्पेस सेक्टर जो हमें लगता था अमेरिका का है, दूसरे रशिया का हो सकता है, बाकी देशों का, आज भविष्य में स्पेस सेक्टर में भारत एक बड़ी ताकत बन के उभरने वाली है। हमें शायद अपनी इस ताकत का ही आभास नहीं था, लेकिन मोदी जी को युवा पर विश्वास था। मैं जब मंत्री बना तो मुझे निर्मला जी को बुला के मोदी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा, युवाओं को स्टार्टअप में जो भी चुनौतियां आ रही हैं हमें उसको एड्रेस करना है, इनका कंप्लायंस बर्डन कम करना है, हमें स्टार्टअप की ताकत को खड़ा करना है। और आज देखिए स्टार्टअप्स में भारत एक बड़ी शक्ति बन के उभरा है। And a quick update to all the viewers who are watching us live and also who are in audience that we are taking questions with Honorable Minister. We'll be opening the floor for questions. In fact, there are a lot of people who have already asked questions via our Twitter handle with hashtag NDTV Yuva. तो मैं इससे शुरू करूं या मैं कुछ और सवाल मैं आपसे पूछ लूं? एक सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि दिल्ली से रिलेटेड है। दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं और उनको भी युवा कहा जाता है। तो अभी तो मुख्यमंत्री मत यार, तो क्या कहा जाए? आप तो सवाल पे उठा रहे हैं कि जेल से सरकार चलेगी। देखिए, आज के युवा को एक बात तो समझनी पड़ेगी। बहुत कुछ ऐसा मीडिया, सोशल मीडिया में दिखता है, आपको उसकी जड़ तक, गहराई तक जाना चाहिए। जिस शख्स की ये बात करते हैं वो दुनिया को भ्रमित करने वाला है, गुमराह करने वाला है, उससे बच के रहना। क्योंकि आज से 10 साल पहले जब राजनीति में वो आए, उससे पहले कहते थे मैं अपनी बेटियों की कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। कहा था राजनीति में आए, कहा था मैं कांग्रेस से कभी नहीं हाथ मिलाऊंगा, गले लगाया। कहा था मैं कभी बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। शीश महल बनाया, 45 करोड़ का घपला उसमें कर लिया। इससे बड़ी बात, एक नहीं 2-2 बड़ी गाड़ियां ली और 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ली। जो कहते थे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आज ऐसी लड़ाई लड़ी है कि खुद भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए जा रहे हैं। जिनका पार्षद भी भ्रष्टाचार के चलते जेल में है, जिसका विधायक भी जेल में, जिसका सांसद भी जेल में है, जिसका शिक्षा मंत्री भी जेल में, जिसका स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में, जिसका उप मुख्यमंत्री भी जेल में है, और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री भी जेल में है। लेकिन अनुराग जी, आप लोगों पर आरोप है कि आप लोग एजेंसीज का मिसयूज करते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बस ऑपोजिशन लीडर्स को उठाती है और सवाल पूछती है, सीबीआई का वही है, इनकम टैक्स कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर रही है। देखिए, इनकम टैक्स को लेके कानून है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो आपको टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आपको रिटर्न हर साल फाइल करनी। क्या कांग्रेस इतनी व्यस्त और मस्त रही कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाई? तो क्या करना चाहिए? देश के कानून से ऊपर कांग्रेस को रख दें? क्या कांग्रेस पे कानून लागू नहीं होता है? और दूसरी ओर जो व्यक्ति कहता था मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन लड़ूंगा, जब उसकी पार्टी भ्रष्टाचार करती है, पंजाब का उनका स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा देता है भ्रष्टाचार के चलते, 2 महीनों के सरकार के बनते उनको इस्तीफा देना पड़ा भ्रष्टाचार के चलते।
उनका दिल्ली का मंत्री 1.5 साल से जेल में है मारिया जी, 1.5 साल से, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनको ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं। तो कानून की माने कि अरविंद केजरीवाल की माने? उनका शराब मंत्री, उनका उप मुख्यमंत्री जिसको क्लीन चिट देते थे, मोनीश सिसोदिया, पैसे खाए, कितने महीनों से जेल में है। आज अरविंद केजरीवाल जेल में है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या देश का कानून अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए अलग से बना दिया जाए? हेमंत सोरेन अगर कोई व्यापारी हो, कोई कर्मचारी हो, बीजेपी का नेता हो, किसी दल का नेता हो, नहीं, लेकिन कोई भी एक बीजेपी के नेता या फिर आपके अपने अलायंस के किसी नेता के बारे में बताइए जिनके खिलाफ ईडी का एक्शन हो। बहुत सारों के होता है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो उसके ऊपर होगा ही। और मैं आपको आज स्पष्ट कहना चाहता हूं और आज सबको विश्वास दिलाता हूं, अगर कोई भाजपा का अधिकारी, कोई व्यापारी, कोई नेता, कोई भाजपा के साथ जुड़ा कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि भी है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी अगर उसने भ्रष्टाचार किया होगा। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। चलिए, अब एक सवाल पहले लेकिन अगर हमने किया ही ना हो तो हम किस बात क्या करेंगे भाई? सर, ईडी का 10 साल से देखिए, 10 साल से हमने कहा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। हमने 10 साल मारिया जी सरकार चलाई। आप मुझे एक आरोप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी पर लगाओ भ्रष्टाचार का, एक बता दीजिए। चलिए, ऑडियंस सवाल पूछेंगे सर, लेकिन उससे पहले झुमरू, वेयर इज झुमरू? अरुण सर, अरुण हैज 1 million फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। नमस्ते। झुमरी तलैया तो सुना था लेकिन and he has a complaint that you did not invite him for the influencers award. I was pretty bummed, sir. But I have a question. My question is, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड आपने किया, बहुत बढ़िया इवेंट था, और ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के मैंने पोस्ट देखे, बट देन देयर इज अ कॉन्वर्सेशन अबाउट इट दैट यू नो द टाइमिंग ऑफ इट इज जस्ट अहेड ऑफ द इलेक्शंस, और दूसरा, व्हाई does a party like BJP, which is so big, need influencers, creators? Because हम देख रहे हैं वो interviews भी हो रहे हैं influencers के साथ, इस तरह के event भी हो रहे हैं. So first, is it strategic? B, why does a political party, a mainstream political party, need influencers? I have a counter question to you. Do you think the creator should be recognized? 100%. So that is what we did. Okay. So it was to appreciate them. And if you look at the content what our creators create, it helps up government like ours who have done a lot of work, but to reach out to masses, every nook and corner. I think on one hand, my ministry, information broadcasting, which does a greater role, we have one of the greatest communicators like Mr. Modi, who's got millions of followers on each platform. He does my job much easier to create more awareness. But at the same time, you have a very interesting way of telling people about the policies, programs, and various other options available to the people. Why not to take the advantage of that and create more awareness and let people know here is the policy or the program which could be of your advantage. And is it why that you also create a lot of reels on Instagram to reach out to these young faces? मेरा तो छोटा सा, मुझे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं, सिर्फ थोड़े से ही फॉलोअर्स हैं, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क उससे पड़ता नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं कुछ लोग जुड़ें, देखें, लेकिन हम लोग आपके काम से बहुत कुछ सीखते हैं और मुझे लगता है हर किसी को जीवन में सीखते रहना चाहिए। कोविड ने हमें एक बात तो सिखाई है, आप किसी कंपनी के CEO हो, आपको बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण की हो, बट you have to upskill yourself, you have to reskill yourself, and with the latest technologies coming in, with the more use of artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, I think the future will have a lot of challenges but also opportunities to take the advantage of technology. And I think you guys have used it well to reach out to millions and millions of Indians. Hats off to all my influencers, and looking forward for, you know, when I say India should become the content hub of the world, content continent, it doesn't mean only restricted to the films or the short films or documentaries. Content, what you create on Instagram or on other platforms, or maybe on the YouTube, the short videos, actually help to reach
cut across boundaries and reach out to millions of people who live outside India. Would you mind if we create a fun video with you? Later, perhaps, Jumru. Okay, For go the ahead. moment, there are more questions. Let's pass the mic, please, now. Yes. Good afternoon, sir. I am Amrendra from MT University, Noida, Uttar Pradesh. My question is related to simultaneous elections. Sir, a high-level committee led by former President, Honorable President Ramnath Kovind ji, submitted its report to President Draupadi Murmu regarding implementation of simultaneous elections. But sir, don't you think simultaneous elections will be a huge blow to India's popular sovereignty, sir? Not at all. If you look at before 62, we used to have simultaneous elections only. ये तो 1962 के बाद बदला है, मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज जी। उससे पहले तो लगातार एक साथ चुनाव होते थे। एक समय तो ऐसा है कि जहाँ पे 4 राज्यों के चुनाव अलग हुए तो पंडित नेहरू ने तो वहाँ की सरकारों को बर्खास्त करके तो वापस बात में करवा दिया था। ऐसा ही हुआ था, शायद कुछ हुआ था कि नहीं हुआ था? I'm not too sure about Yes, it. sir. बता but, देना पूछ I'll के। go with your version. लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि देश में अगर एक चुनाव पे इतना पैसा खर्च होता है, इतनी एनर्जी लगती है, आप देखिए, बैठिए प्लीज। इस साल कहां कहां चुनाव हुए? राजस्थान में हुआ पिछले साल 3 महीने पहले ही। राजस्थान में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, और कहां पे हुआ? कहां हुआ? तेलंगाना में हुआ, एक राज्य और में हुआ, मिजोरम में हुआ। 5 राज्यों में चुनाव हुए। अभी हमारे बाद कितने राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? दिल्ली का होगा, महाराष्ट्र का होगा, हरियाणा का होगा, 2-3 राज्यों का और होगा। तो अगले 5-6 महीनों के अंदर फिर 5-6 राज्यों के चुनाव हैं। अगर कुछ राज्यों के चुनाव को प्रीपोन कर दिया जाए, कुछ को 3-4 महीने पोस्टपोन कर दिया जाए, तो 10-15 राज्यों के चुनाव तो एक साथ हो सकते हैं। यानी कि आपका सिक्योरिटी से लेके बाकी सारे खर्चे, हजारों करोड़ रुपया देश का बच सकता है। जो इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट में आपके कई महीने कामकाज नहीं हो पाता, आपका वो समय बच सकता है। हमें जो भारत को विकसित भारत अगले 25 सालों में बनाना है, अगर हम ये समय अगले 5 वर्षों के अंदर बचाना शुरू कर देंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये भारत 2047 का इंतजार नहीं करेगा, उससे पहले ही विकसित भारत बनाने का काम पूरा हो जाएगा। Let's take more questions. Please move the mic. Yes, Hi. please go ahead. Hi, I'm Swati Pai, working as a software engineer and gearing up for my first voting experience. So as a young woman, I'm deeply interested in understanding the government's forthcoming initiatives pertaining women-centric policies, and over the next 5 years, what measures are anticipated to bolster job opportunities and foster gender equality amongst youth? Thank you. I think that's a very good question. On one hand, we see people like Rahul Gandhi who speak about Shakti, that means about women, महिलाएं हो, बच्चे, बेटियां हो या बहनें हो, उनके खिलाफ वो कहते हैं मैं शक्ति के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनकी योजनाएं ही नारी शक्ति के पक्ष में हैं। एक और नारी शक्ति वंदन बिल वर्षों से पूरा नहीं हुआ था। We have promised and we have fulfilled the promise to provide 33% reservation in the assemblies and in the parliament also. I think to empower women, that is one of the example we have set across. दूसरा, अगर आप देखेंगे देश की राष्ट्रपति, ये हमारी लोकतंत्र की बड़ी ताकत है। वो एक पिछड़े इलाके से आती हैं, ट्राइबल इलाके से आती हैं, ग्रामीण इलाके से और गरीब परिवार से आती हैं, लेकिन अपनी मेहनत के बल पे एक पार्षद से राष्ट्रपति के पद तक पहुंचती है। भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। पिछले राष्ट्रपति देखेंगे रामनाथ कोविंद जी, तो एक दलित परिवार से आते थे, कानपुर से, बहुत छोटे से परिवार से, घर भी नहीं था, बहुत छोटा सा घर था, वो देश के राष्ट्रपति बने। एपीजे कलाम साहब अल्पसंख्यक समाज से आते थे, बहुत गरीब परिवार से आते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको देश के राष्ट्रपति के पद तक पहुंचाया। आज भी लोग सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में किसी को याद करते हैं, एपीजे कलाम साहब को याद करते हैं। जहाँ तक महिलाओं की आपने बात कही, ब्रो डिडंट इवन हेजिटेट। महिलाओं को 10 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिए, यानी कि एलपीजी के सिलेंडर और चूल्हा बिल्कुल मुफ्त में दिया। 4 करोड़ पक्के मकान, जिनमें से 3 करोड़ बहनों के नाम पे सीधे पक्के मकान बनाकर दिए, पक्के मकान की छत दी। 13 करोड़ घरों को नल से जल दिया। 12 करोड़ शौचालय टॉयलेट्स बनाए, जो इज्जत घर के रूप में उन्होंने काम किया।
60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में दिया, जिसमें 32 करोड़ महिलाएं हैं। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, जिसमें लगभग 40 करोड़ महिलाएं हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से लेकर सुकन्या समृद्धि योजना हो या 34 करोड़ मुद्रा योजना लोन में से 65% महिलाओं के लिए हो, ऐसे अनेक काम। डिफेंस फोर्सेस में 10,400 आज भारत की बेटियां हैं, चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, भारत की बेटियां हर मोर्चे पर सबसे आगे हैं। आज अगर मैं दुनिया के वुमेन पायलट्स की बात करूं तो 12.4% दुनिया की वुमेन पायलट्स भारत में हैं। दुनिया की सबसे बड़ी फ्लीट वुमेन पायलट्स की आज भारत में है। आज आप अंतरिक्ष से लेकर ड्रोन उड़ाने तक देखें तो महिला है, मुझे सवाल पूछने यहां से लेकर वहां तक देखें तो भारत की महिला है। और मैं ये कहूंगा, आज किसी भी कॉलेज स्कूल में चले जाइए, अगर 10 इनाम मिलते हैं तो उसमें से 7 बेटियों को मिलते हैं। अगर टोक्यो ओलंपिक्स में हमें पहला मेडल जिताने वाली मीराबाई चानू थी तो भारत की बेटी थी, और अगर गोल्ड मेडल भी हमें कॉमनवेल्थ गेम में जिताने वाली थी तो भी भारत की बेटी ही थी। ये सब बेटियां ही करके दे रही हैं। तो मुझे लगता है जेंडर इक्वालिटी तो हमारी सरकार में महिलाओं को सबसे बड़ा स्थान मंत्री बनने का भी मिला है। ये मोदी सरकार में संभव हो पाया है। And as a political journalist, I would like to also add that इस बार जो आपने टिकट्स दिए हैं 405 से ऊपर जो रिलीज हुए हैं, उसमें हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है women आज तक का सबसे ज्यादा वही है। candidates। और कल भी संदेश खली की विक्टिम से जिनको हमने टिकट दिया, देश के प्रधानमंत्री ने उनसे भी बात की और उनकी शक्ति की बात की। यही फर्क है, चाहे भारत की बेटी ओलंपिक्स में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम्स में खेलने जा रही हो, तब भी उसका मनोबल प्रधानमंत्री बढ़ाते हैं, या फिर संदेश खली में उस गली गली में बलात्कारी और अत्याचारियों के खिलाफ लड़े तो उससे बात करने में भी पीछे नहीं हटते। ये शक्ति ये भारत की है जिसको आज रिप्रेजेंटेशन करने का अवसर मिल रहा है। और मैं ये कहूँगा, हम वो पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसने अपनी पार्टी में 25% रिजर्वेशन आज से कई साल पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इकोसिस्टम में, जो हमारे प्रतिनिधि, जो हमारी बॉडी बनती है, उसमें दे दिया था। और हमारे राज्यों में 50% आरक्षण पंचायती राज संस्थानों में हमने आज से कई साल पहले, भाजपा की सरकार ने पहले ही दे दिया है। Okay, more questions, please. And we'll take more questions from women. So please go ahead. Another Hello, girl. sir. I'm Saina Mehra from Modern School, Barakhamba Road, studying in class 12th. And my question to you is, what measures is the government taking to empower and educate the 18-year-olds about their voting rights and responsibilities? I think it's a very good question, especially for the 18 years old, because this time you are going to elect the 18th Lok Sabha. So it's very, very special. First time voter, which Maria ji said, 1.8 crore new voters. That also is like 18, 1.8 crore is 18. And the 18 plus voters will elect the 18th Lok Sabha. And first time voter के लिए मेरा इतना ही कहना है, मेरा पहला वोट देश के लिए। So cast your first vote for the country, for the growth of the country, and pledge to make your country a Viksit Bharat. And let us be part of this journey for the next 25 years to make our country a developed India in the next 25 years. A people's contribution can make the people's movement. जन भागीदारी से ही जन आंदोलन बनता है। और मैं तो कहता हूं, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो दिशा आपका पहला वोट ही दे देगा, और ये दिशा मुझे पता है युवाओं के मन में कौन बसता है। Yes, please. बस सो हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे, और मैं ये नहीं कह रहा कि ऑपोजिशन सही है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे थे ऑपोजिशन गलत है, कल या परसों ही ILO की रिपोर्ट निकली है जहाँ वो कह रहे हैं कि इंडिया में जो एजुकेटेड यूथ हैं उनमें भी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है फ्रॉम 35.2% इन 2000 टू 65.7% इन 2022। एक तो मैं आपकी विचार इस पे जानना चाहूँगा, और दूसरी तरफ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि हम काफ़ी सालों से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पे बहुत गर्व ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम बोलते हैं कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, डेमोक्रेसी इंडेक्स, वो सब बायस्ड हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि एक UN के इंडेक्स को हम क्यों बोलते हैं सही है और दूसरों को क्यों बोलते हैं गलत हैं। और आपने इतने सारे ऑपोजिशन लीडर्स की बात की जो जेल में हैं,
कृपया मुझे ये प्लीज़ बताइए कि उन सब में से ट्रायल कितने का हुआ है और जेल विदाउट ट्रायल कितने हैं? थैंक यू। बहुत अच्छे सवाल हैं आपके, बहुत अच्छे सवाल। मैं धन्यवाद दूं कि आपने सवाल पूछे, और इन्हीं सवालों से प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का पता चलता है कि आप देश के सूचना प्रसारण मंत्री को बेझिझक होकर नेशनल टीवी पर, जो आपका देश और दुनिया में देखा जाता है, बेझिझक होकर आप सवाल पूछ सकते हो। यही दिखाता है, ये आप शायद पाकिस्तान में ना पूछ पाएंगे, बाकी दुनिया के देशों में, सऊदी अरेबिया में ना पूछ पाएं, या अन्य देशों में ना पूछ पाएं, आप यहाँ पूछ पा रहे हैं, और मैं देश का सूचना प्रसारण मंत्री आपको उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। देखिए, हम आज भी गुलामी की मानसिकता के साथ चल रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि वर्षों तक हम लोग दुनिया की रेटिंग एजेंसीज के ऊपर ही निर्भर करते रहे। हमारे अपने आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं। मैंने ईपीएफओ का आंकड़ा दिया, आपने उसके ऊपर 6.4 करोड़ का मैंने जो आपको जो आंकड़ा दिया, विच इज अबाउट 64 मिलियन पीपल हैव रजिस्टर्ड ऑन द ईपीएफओ। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर. If you look at the total population of Australia, New Zealand, many other countries, it is much bigger number than that. It speaks volume. If I have to talk about 200 million e-shram cards, it is much larger than the whole of European Union. It is much larger than the America and South America. I think हमें इस गुलामी की मानसिकता से बाहर आना चाहिए और अपने देश की संस्थाओं पर और विश्वास करना चाहिए। दूसरा जो आपने कहा कि कुछ लोग जेल के अंदर है, कितने ट्रायल में हैं। अब मैं आपको, एक निर्भया कांड हुआ था, कब हुआ आपको याद है? 16 दिसंबर 2012 को यही हुआ था। कितने साल बाद फांसी हुई? फास्ट ट्रैक कोर्ट था, कितने साल लगे? हमारे देश में जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें थोड़ा समय लगता है, और आप किसी को प्रॉपर ट्रायल के बिना किसी को हैंग कर दो, वो भी उचित नहीं, उसका भी न्याय का अधिकार है। जांच एजेंसियां अपने पूरे सबूत दे रही हैं। अगर मैं आपसे दूसरा काउंटर क्वेश्चन ये करूं, सत्येंद्र जैन कितने महीनों से जेल में हैं? संजय सिंह कितनी देर से जेल में? मनीष सिसोदिया कितनी देर से जेल में? बाकी लोग कितनी देर से इनके लोग जेल हैं? ऐसे कई और हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर हैं, भ्रष्टाचार के मामले में हैं, नेशनल हेराल्ड के मामले में हैं, जो अखबार के नाम पे ना हजारों करोड़ की कितनी संपत्तियां इकट्ठी कर ली। ये किसे झुटलाया नहीं, सब सामने सबूत है, लेकिन समय लगेगा। अब कोर्ट, इसके ऊपर तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। लोग जितना मर्जी प्रहार हमारे न्यायालय पर करें, हम आज भी कहते हैं हमें भारत के जुडिशरी पर विश्वास है, वो सबको एक समान अवसर दे रही है, और इन सबके पास अवसर है न्यायालय जाने के लिए। किसी को बेल मिला है तो किसी को जेल मिली है। हम अपने सिस्टम पर हमें विश्वास करना पड़ेगा। आज वो पार्टी जो 60 साल देश में राज करती रही, आज वो से एकदम से कहें इलेक्शन कमीशन चोर है, न्यायालय चोर है, फलाने को चोर, ये कैसे चल सकता है? यू कांट से ईवीएम्स आर करप्ट। एक व्यक्ति, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया गया कि कोई भी आए, सब लोग आए, बताइए कि ईवीएम कहां गलत है। कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? केवल कीचड़ उछालो और भाग के चले जाओ, ऐसे काम नहीं चल सकता है। इसलिए मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं, ये जो 34 करोड़ मुद्रा लोन मिले हैं, ये रोजगार ही है, ये स्वरोजगार के अवसर हैं। आज भारत बदल रहा है। जो मारिया जी ने कहा, पहले जॉब सीकर थे, आज जॉब गिवर है। बदला है जमाना। आज स्टार्टअप करने में लोग संकोच नहीं करते, बड़ी बड़ी नौकरियां। मुझे ऐसे ऐसे लोग कई बार ट्रेन में और प्लेन में मिलते हैं जो बाहर विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़ के, जिनके ऊपर शायद करोड़ों रुपए खर्च हुए होंगे, कई अपने स्कॉलरशिप में पढ़ के आए होंगे, आज वो लाखों रुपए महीने की नौकरी को लात मार के स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। तो क्या हम उसको रोजगार नहीं मानेंगे? क्या देश की महिला जो अपना सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आज लखपति दीदी, 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन गई। हमने 2 करोड़ बनाने के लिए कहा था, 1 करोड़ को हमने बना दिया। अब ने टारगेट 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का रखा है। ये कौन रखता था? हम हैं जो टारगेट रखते भी हैं और टारगेट अचीव भी करते हैं। मोदी सरकार ने करके दिखाया। एंड कैमरामैन फोकस प्लीज। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने कहा कैमरामैन फोकस प्लीज। देश में 2014 में 74 एयरपोर्ट थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में मेट्रो है।
2014 में 384 मेडिकल कॉलेज थे, आज 700 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज हैं। 2014 में मात्र 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। 2014 में 450 यूनिवर्सिटी थी, आज 1100 यूनिवर्सिटीज हैं। 2014 में 96,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे, आज 1.5 लाख किलोमीटर हाईवे हैं। 2014 में 3,20,000 किलोमीटर पुरानी सड़कें थी, यानी ग्रामीण सड़कें थी, आज 3,75,000 किलोमीटर नई सड़कें जोड़ी हैं। 2014 में क्या था? 0 वंदे भारत थी, आज 41 वंदे भारत हैं। 2014 में मात्र 20,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक जो इलेक्ट्रीफाइड था, आज पूरे का पूरा रेलवे इलेक्ट्रीफाइड है। 2014 में उत्तर प्रदेश में मात्र 2-4 एयरपोर्ट ऐसे होंगे, आज 21 एयरपोर्ट हैं और 8 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 2014 में हम लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थे, आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए और आने वाले समय में 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। 2014 में हम सुनते थे कि भारत की ग्रोथ डिप कर रही है, आज सुनने को मिल रहा है वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है तो भारत है। दुनिया में सुनते थे उस समय डिप कर रही इकोनॉमी, आज ब्राइट स्पॉट के रूप में भारत नजर आता है। यह फर्क है 2014 में 2G स्कैम, CWG स्कैम, अंतरिक्ष घोटाला, देवास घोटाला, कोयला घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, नेशनल हेराल्ड घोटाला, ये सुनने को मिलते थे। आज ईमानदार सरकार के चर्चे सुनने को मिलते हैं। यही फर्क है, उस दिन सरकार गिर रही थी, आज चंद्रयान मिशन जैसी सफलता हो रही, G20 जैसे आयोजन हो रहे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो रहा है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो रहा है। आज योग से लेकर आयुर्वेद हम दुनिया को दे रहे हैं, तो साथ ही साथ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कर रहे हैं। यही अंतर है 2014 का भारत क्या था और नया भारत, युवाओं का भारत आज क्या है। That's, we could end the conversation here, but there are several more who want to ask questions. No, I want to have more questions. Oh, please go ahead. Hello sir, I'm Raghav from Modern School, Barakhamba Road, studying in class 12th. My question is that after an outstanding performance in the Tokyo Olympics and with Paris Olympics on the cards, how is the government ensuring that the Indian athletes are prepared well, and what are India's key objectives, and how do you think can this particular event encourage the youth all over India? No, thank you for asking that question. And Modern School is one of the school which has beautiful playgrounds. They have a lot of emphasis on sports for last so many years, and we have seen so many cricketers to other sports person coming out of your school. Congratulations to Thank you. Congratulations for that. On social media for you, Yeah, Anurag sir. The question is that the sports sector has immense potential for job creation and economic growth. How do you intend to promote entrepreneurship and employment opportunities within the sports industry, particularly for young athletes and enthusiasts? थैंक यू। मैं दोनों सवालों का एक साथ जवाब दे देता हूं। बैठिए प्लीज। अगर मैं इसको थोड़ा सा कटाक्ष करके ऐसे कहूं जैसे विपक्ष होते हैं, क्या किया आपने, क्या किया खेलों में, तो मैं इतना ही कहूंगा 2014 तक मात्र 600 करोड़ रुपए के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, हमने 3,000 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना कर दिया है। 2014 से पहले टॉप स्कीम नहीं थी, हमने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम लाए, बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग, देश विदेश में खिलाड़ियों का खर्चा भारत सरकार वहन करती है। 6 लाख रुपया जेब खर्च आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भारत सरकार देती है, 50,000 रुपया महीना केवल जेब खर्च, ओवर एंड अबव बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग भारत सरकार देती है। डेवलपमेंट एथलीट को 3 लाख अलग से देती है। खेलो इंडिया एथलीट के लिए 6,20,000 रुपया मिलता है, जो 3,000 खिलाड़ी हमने चयन किए उनके लिए। 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हम देश भर में चला रहे हैं, 69 साइट ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं। मैंने कहा था मैं 1.5 साल में 750 खेलो इंडिया सेंटर बनाऊंगा, आज मैं सिर ऊंचा करके कहता हूं 1075 खेलो इंडिया सेंटर हमने बनाकर दे दिए हैं। हमने 480 नए कोचेस की नियुक्ति कर दी, हमने मिशन ओलंपिक सेल बना दिया। वो कहते थे कितने मेडल जीत कर लाओगे, मैं कहता हूं जितने आपने आज तक जीते थे उससे ज़्यादा हमने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 26 मेडल जीते, जो आज तक के टोटल मेडल से ज़्यादा है। पिछली बार एशियन गेम्स में मात्र 64 मेडल थे। हम क्रिकेट में तो सेंचुरी सुनते थे, मैंने कहा इस बार 100 पर एशियन गेम्स में करके दिखाओ, और हमारे खिलाड़ियों ने 107 मेडल एशियन गेम्स में जीते। फिर पैरा एशियन गेम्स में 111 मेडल हमने पैरा एशियन गेम्स में जीते हैं। इसके अलावा हमने कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल 61 जीते। हमारी 4 महिला बॉक्सर्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनी, और यही नहीं 6 बार की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन हमारी मैरी कॉम
हमारे यहीं से नॉर्थ ईस्ट से हैं। हमने नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनाने का काम शुरू किया है। एक नहीं अनेक काम हमने खेलों में किए हैं। और वो कहते हैं आपने क्या किया? हमने कुछ नहीं, बस इतना सा ही किया है। इसी बात पर 4 से 5 क्वेश्चंस हम और लेंगे। आप यस प्लीज गो अहेड, इफ यू कैन पास द माइक। Good afternoon, sir. I am Pratik Jha, advocate at Supreme Court of India. My question in respect of Yuva voter. They are teenagers. Can you bring it closer to? If you can bring the mic. I am Pratik Jha, advocate at Supreme Court of India. My question in respect of Yuva voters are, they are teenager. They are mostly teenager, and by virtue of their teenage, they can be easily misled, and they do not carry much experience. And there is a possibility that they fall in trap of social media and digital media campaign and may vote for a party or a candidate which later on retracts from its own version. So in that case, a youth, a Yuva voter, a first time voter find himself to be cheated and broken. So what is the effective recourse in such situation? As of now, I do not know any effective recourse except repenting for upcoming 5 years to wait for next election. Sir, if you come in 2024, as you have always known for raising voice against the Gaddars, so will you be doing anything in this respect where the party or a candidate turns Gaddar? Will government introduce something? Will there be any effective recourse when a party or a candidate retracts from his own version and acting oppositely as per his version? कथनी और करनी में फर्क आ जाए, तो इसके लिए क्या कुछ इंट्रोड्यूस किया जाएगा? Thank you for the Thank you, question. sir. Please go ahead. आज के नए भारत के युवा के लिए मैं इतना ही कहूँगा, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है खुद, ज़माने से हम नहीं। युवाओं को इस उम्र में आपकी आशंका ठीक है कि भ्रमित होने के बहुत सारे प्रयास किए जा सकते हैं, उनको भ्रमित करने का कोई प्रयास कर सकता है, लेकिन आज का युवा बहुत जागरूक है। अगर मैं अपने समय के युवा की बात करूं और आज आपकी पीढ़ी की बात करूं, तो आई थिंक देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस अमंग टुडेज यूथ, और उसको अपने अधिकार का भी पता है। इसलिए मैंने कहा कि अपना पहला वोट देश के लिए, और वो जानता है कि देश के लिए कौन काम कर रहा है, देश का मान सम्मान किसने बढ़ाया है, आगे कौन करना चाहता है। मुझे इस बात की बहुत चिंता नहीं, लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि युवा 31 मार्च से पहले पहले अपना वोट बनवा ले। सबसे पहले तो वोट बनाना ज़रूरी है, वोट बना ले, और फिर वोट कास्ट करने के लिए गर्मी कितनी भी हो, तपती धूप हो या बारिश हो, लाइन में कितनी देर भी लगना पड़े, 5 साल में एक बार अवसर आता है, खोना मत। जब गरीब से लेके अमीर तक, झोंपड़ी वाले से लेके महल वाले तक, उसके वोट की ताकत एक बराबर होती है, और सरकार चुनने के लिए आपको उस ताकत को गंवाना नहीं चाहिए, अपना वोट कास्ट ही करना चाहिए, अच्छी सरकार को चुनना ही चाहिए। आप किसी को भी चुने, लेकिन देश के उज्जवल भविष्य के लिए चुने, इतना मैं आपसे आग्रह करता हूं। जहां तक आपने कहा कोई गद्दार हो, ये सबके लिए अलग अलग कानून बने हुए हैं, कानून उनके ऊपर लागू होते हैं। कोई एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं पर लागू होता है, कोई अपनी पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है, और अगर कोई देश के खिलाफ गद्दारी करता है तो उसको भी देश के कानून के तहत सजा देने का काम होता है। Okay. Go ahead. 4 more questions. 2 from these 2 girls and then 1 more. Good afternoon, Behind sir. My that- name is Manpreet and I'm from Campus Law Center, Delhi University. So my question is related to Sports Federation, right? So as we already know the issue regarding the World Federation, which was in the national headlines. So my question is peculiar to the Sports Federation, as there is no internal complaint committee. So, so even there is a mandate of the same under the POSH Act, right, which is prevention of sexual harassment. So my question is that how the government and you as a union ministers of the sports has taken any steps in this regard, and what are the other policies with regard I to think the when we talk about the field of sports, it's a very relevant question because national sport federation plays a very, very important role. Sports is a state subject. On one hand, the state government has to play a very important role. Apart than that, it is the National Sport Federation who have to do the selection process and also for the growth of the game. Well, there are many sport federations where you have a ad hoc committee. A retired judge of the Supreme Court or the High Court is sitting there for last 5 years.
That is an unwanted situation. We never wanted it, but the courts have appointed them. For example, Kabaddi, they have a retired judge already being there. There is another judo association, two other associations, where they were asked to be there for 3 months, but they are here for more than 3 years, 5 years. That was the case with the football also some time back. We want the elections to be held soon for the National Sport Federation. They should have an elected body who should govern it properly. As far as the Internal Complaints Committee is concerned, it is mandatory for every National Sport Federation to have the Internal Complaint Committee. And let me assure you, every federation today have a Internal Complaint Committee. Well, if you're hinting it towards the wrestling at that time they also had an Internal Complaint Committee, but not functional that well. We had made sure that every federation have an Internal Complaints Committee. Okay, so can the mic be moved right there? Let's combine those two questions and then come in the front. Yes, please, go ahead. Good morning, sir. My name is Prajwal. I am a software engineer who is currently pursuing law. My question to you is, now that IPL fever is on, and you have been the BCCI president before, we have an IPL ecosystem which is of 1 lakh crore, like which generates a lot of revenue to the country and also to the BCCI. How is the Ministry of Sports helping other sports other than cricket develops the same ecosystem so that other sports also create more jobs? मुझे लगता है आपका सवाल और मारिया जी के सवाल का जो मैं उत्तर नहीं दे पाया इकट्ठा दे देता हूं। इन्होंने भी उस समय कहा था कि मैं स्पोर्ट्स इकोसिस्टम से कैसे ज़्यादा रोजगार और अवसर और इंडस्ट्री को खड़ा किया जा सकता है, और आपका भी उससे जुड़ा हुआ ही है। देखिए, क्रिकेट एक बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू यहाँ तक इस स्तर तक पहुँचा है। एक समय था जब क्रिकेट में भी इतना पैसा नहीं था। 1983 वर्ल्ड कप के बाद जब कपिल देव की टीम चुनकर आई तो बीसीसीआई के पास उनको इतना पैसा नहीं था कि उनको अच्छे से सम्मानित कर सके, कैश अवार्ड्स भी दे सकें। और उस समय लेट लता मंगेशकर जी ने उस समय एक नाइट की, उससे पैसा रेज हुआ, तब उनको पैसा दिया गया। आज परिस्थितियां बदली है, क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। हम क्रिकेट के माध्यम से बहुत सारे स्टार्स आज देश के जो ग्लोबल स्टार्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन बीसीसीआई ने उस खेल को बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनलिज्म भी लेकर आए। बहुत अन्य फेडरेशंस ने भी उस दिशा में काम किया है, जिन्होंने अपनी लीग्स की शुरुआत की है। कबड्डी बहुत पॉपुलर लीग हुई, बीच में रेसलिंग पे शुरू हुई, बैडमिंटन पे शुरू हुई, खो खो की चल रही है। इस तरह से वॉलीबॉल की भी बीच में एक प्राइवेट संस्था ने शुरू की। कई बार कुछ समय लगता है इकोसिस्टम क्रिएट होने के लिए। जो गेम पॉपुलर होगी वो जल्दी पिक कर लेगा। जहां पे आज लोगों के पास उतना टाइम नहीं कि आप लंबा लंबा गेम देखते हो, आपको 3 घंटे, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 1 घंटे, इतना ही मैच देखने का आपकी रुचि रह गई है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत यह है कि आज डिजिटल मीडिया के कारण आप फ़ोन पे भी चलते हो, ऑन द गो मैच देख सकते हो, आप अपने लैपटॉप पर या अपने टैबलेट पे भी वो देख सकते हो। तो एक नई ताकत, उससे भी व्यूअरशिप उससे बढ़ गई है। जैसे एनडीटीवी की ऐप पे बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, सबसे ज़्यादा शायद उस पर ही होगी। तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास अवसर दे रही है। इसी तरह से स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में एक और तो लीग्स है, दूसरी ओर जैसे मैं सांसद खेल महाकुंभ करता हूं अपने यहाँ पे, 70,000 खिलाड़ी, 50,000 खिलाड़ी ऐसे उसमें भाग लेते हैं एक लोकसभा क्षेत्र में। तो उससे लोकल जॉब्स भी क्रिएट होती है, लोकल रेवेन्यू भी जनरेट होता है। ऐसे ही मुझे देखकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि तुम बाकियों को क्यों नहीं बताते हो। तो आज बीजेपी के लगभग 350-400 सांसदों में से 250 से 300 सांसद बीजेपी के हर साल खेल महोत्सव, खेल उत्सव या खेल महाकुंभ इस नाम से वो करते हैं। तो लोकल इंडस्ट्री अपने आप जनरेट होती है। टी शर्ट्स बिकती हैं, बैट बॉल बिकता है, वॉलीबॉल, फुटबॉल, अलग अलग इक्विपमेंट बिकते हैं। जो ट्रेनर के रूप में आते हैं, कोचेस के रूप में आते हैं, कोई एम्पायर्स के रूप में, रेफरी के रूप में आते हैं, उनको आय के साधन बढ़ते हैं। तो मार्केट में पैसा आता है, जॉब क्रिएशन होती है, इससे रोजगार स्वरोजगार के अवसर खड़े होते हैं। अब भविष्य के लिए क्या होगा? जो प्रोफेशनल्स आपके अलग अलग कोर्सेज करके निकले हैं, वो अगर अपनी छोटी छोटी स्टार्टअप्स भी बनाएंगे, तो अगर आप 400-500 एमपीज, 1000 के लगभग एमएलएस को भी पकड़ लोगे, तो आपकी कंपनीज के लिए बहुत सारा धंधा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यानी कि आप उनके लिए एक प्रोफेशनल ढंग से उनका पूरा टूर्नामेंट करवा सकते हो,
उनके लिए पैसा रेज करवा सकते हो, स्पॉन्सरशिप ला सकते हो और अपने लिए भी पैसा वहाँ से कमा सकते हो। एक तो ये है। दूसरा, स्मॉलर लीग्स इन द स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमेरिका का स्पोर्ट्स सिस्टम देखोगे तो वहाँ वॉलीबॉल की लीग चलती है, अमेरिकन फुटबॉल की लीग चलती है, अन्य गेम्स की लीग चलती है। जो दुनिया में खेल नहीं खेले जाते होंगे वहाँ पे होता है। तो मुझे लगता है हर देश की अपनी एक ताकत है। मलखंब एक इतना लोकप्रिय खेल है, उसके आसपास लीग हो सकती है। हमने गटका से लेकर थांगटा, कलारेपट्टू, हमने तो अपनी ट्रेडिशनल गेम्स को भी बल देने का काम मोदी सरकार ने किया है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम इसको ट्रेडिशनल नहीं, हमने इसको नेशनल गेम्स का हिस्सा बनाया है और भविष्य में हम अपनी ट्रेडिशनल गेम को इंटरनेशनल गेम्स का हिस्सा बनाने वाले हैं। और आज युवा भारत के सामने मैं कहना चाहता हूं, एक और हम अपने मेडल्स की टैली को बढ़ाएंगे पेरिस ओलंपिक्स में, तो 2030 की यूथ ओलंपिक्स हम भारत में और 2036 की समर ओलंपिक्स भारत में कराने के लिए भारत ने कमर कस ली है। वो संभव भी हम करके दिखाएंगे। आज के भारत की वो ताकत है कि भारत रुकता नहीं है, नए आयाम स्थापित करना चाहता है, चाहे वो G20 की अध्यक्षता हो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हो, योगा हो, आयुर्वेद हो, या फिर अब ओलंपिक्स के आयोजन की बात हो। भारत के कदम रुकेंगे नहीं, आगे ही बढ़ते जाएंगे। We'll take one question from, yes, two questions. Let's combine both. Yes, go ahead. Okay, so hello sir, my name is Shubhangi Rajawat and I am a 20-year-old entrepreneur, and I really appreciate the work and the efforts BJP government has put in, especially for businesses and startups. At the same time, I feel that for a 20-year-old women entrepreneur, it becomes very difficult to raise those initial funds which, you know, give that boot to my startup, because the funding system in the India is very close-knit, and once you invade that system, great enough, but for someone who does not come from a pedigree like majority of the IIMs and IITs, it becomes very difficult to raise funds. So I would be glad if you would, you know, Throw a spread light some- on that. yeah. Sure, the minister will do that. Please go ahead. The next question and we'll combine both. Hello, sir. Consider me a representative of a student society, an autonomous one. So, sir, यहाँ पे कब से हम युवा सपोर्ट की बात कर रहे हैं, युवा की बात कर रहे हैं. So I guess it would be unfair if we don't talk about the minor section of the युवा, which is the specially abled youth. Surely, sir, educational institutions काफ़ी बने हैं, the numbers has risen, but the specially abled friendliness of these institutions, they are still low. So would you like to enlighten us on government's previous programs or the upcoming plans on this front? All right. So thank you so much for all the questions, sir. पहले तो मारे जी मैं कहूँ कि स्टार्टअप फंड जो है उससे भी मदद दी जा सकती है। नीति आयोग को आप पिच कर सकते हैं। बहुत सारे और लोग स्टार्टअप जलसा से लेके आपके शार्क टैंक से लेके ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से लोग फंडिंग पैटर्न की ओर देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों के पास पैसा अवेलेबल भी होता है। ई कॉमर्स एक अनदर ऑप्शन है जहाँ पे आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए। ONDC हमने एक और प्लेटफॉर्म बनाया डिजिटल कॉमर्स के लिए, ओपन नेटवर्क ये क्रिएट किया है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जहाँ पर 6 लाख करोड़ से ज़्यादा की आज तक परचेज बहुत ट्रांसपेरेंट मेथड से हो रही है, जो MSME सेक्टर के लिए, कॉटेज इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी ऑप्शन बनी, जो कल तक सरकार को अपना सामान नहीं बेच पाते थे, वो हो रहा है। लेकिन आपका स्पेसिफिक इस तक था कि फंडिंग पैटर्न कहाँ तक आए। मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बता रहा था कि आपके पास ऑप्शंस कहाँ कहाँ अवेलेबल है, अपने प्रोडक्ट को पिच करने के लिए मार्केट अवेलेबल है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है लेकिन उनको ये नहीं पता इन्वेस्ट कहाँ करना है। तो मुझे लगता है भविष्य के लिए वो अपने आप एक बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स आएंगे जहाँ पे लोग इकट्ठे होके हैज फंड इस तरह से क्रिएट कर पाएंगे। देश के अंदर भी अभी आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है। आप देखोगे इसका इकोसिस्टम बहुत तेज़ी के साथ बनने वाला है। जैसे हमारे यहाँ रिसर्च के लिए पैसा उपलब्ध नहीं होता था, हमने नेशनल रिसर्च फंड बना दिया, अब उसमें हज़ारों करोड़ रुपए का फंड उपलब्ध होगा इस सब करने के लिए। तो वहाँ पे कोई दिक्कत आने वाली नहीं। मुझे लगता है आपके लिए बहुत सारी संभावनाएं भविष्य में खड़ी होंगी। जहाँ तक आपने स्पेशली एबल्ड की बात कही, मैं इतना कहूँगा 2014 से पहले इसको डिसेबल्ड कहते थे, अपंग कहते थे। फ़र्क इतना है कि हमने सोच भी बदली,
सुविधाएं भी बदली हैं। अब इसको डिसेबल नहीं, स्पेशली एबल्ड कहा जाता है। हमने खेलो इंडिया में हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर अपने स्पेशली एबल्ड एथलीट्स के लिए, पैरा गेम्स के लिए बना रहे हैं। हमारे एग्जिस्टिंग स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को हम इनके यूज़ के लिए बना रहे हैं ताकि उनको यूज़ करने में कोई दिक्कत ना आए। दूसरा, स्पेशली एबल्ड एथलीट्स के लिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स की हमने शुरुआत कर दी, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। हमने इस साल वो भी किया, बहुत हिट वो हुआ। हम जितना कैश अवार्ड एबल एथलीट्स को देते हैं, उतने ही कैश अवार्ड हम अपने पैरा एथलीट्स को भी देते हैं। हम इनमें कोई भेदभाव नहीं करते। टॉप स्कीम का भी हमने अपने पैरा एथलीट्स को हिस्सा बनाया है। और जहाँ तक स्पेशली एबल्ड है, आज उनके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट हम ऐसे बना के दे रहे हैं जहाँ पे उनको स्किल्स और दी जा सके। मैं जब बीसीसीआई का प्रेसिडेंट और उससे पहले सेक्रेटरी था, तो मैंने उस समय ब्लाइंड के लिए, डेफ एंड डम्ब इनके लिए जो क्रिकेट खेलते थे, हमने उनके लिए भी बीसीसीआई से मदद करने की घोषणा की थी, जो आज उनको हम करोड़ों रुपए की मदद करते हैं। हमारी ब्लाइंड टीम ने एक बार नहीं, दो बार विश्व कप जीतने का कीर्तिमान स्थापित किया है। Anurag, thank you so much and wishing you all the best in your battle. Thank also, you. because you're contesting this time. And sir, NDTV 18 का वोट हमारा कैंपेन है, उसके लिए straight into the camera, a message. मैं सबसे पहले तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने मुझे 4 बार लोकसभा का एमपी बनाया। जी। 5वीं बार मैं फिर उनके बीच में आऊंगा, आशीर्वाद पहले से ज़्यादा दें। लेकिन युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, 18 का दम दिखाना है तो 18वीं लोकसभा चुनने के लिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में वोट बनाएं भी, डालें भी, और अपना पहला वोट देश के लिए। Thank you so much, बहुत Anurag Thakur. धन्यवाद। Pleasure speaking to you, and thank you Thank you. to the entire audience for all the questions that they asked. In fact, this is almost a photograph moment. There are students there waiting to get a photograph with you. Please come on the dais. Let's get a picture for all of you with the Honorable Minister. Please come. They have come all the way and they want a picture with you, sir. Come, come, come. आ जाइए, आ जाइए. Please go ahead. Modern school, yes. Please go ahead. How many of you are actually into the sport? Yes. Which game? Yes. Oh, I should also join you? Yes, yes, sure. There are many more who want pictures with you, sir. So you'll have to continue to be on the dais, and then yes, you can be on the dais, and another lot. Please come on the stage. Yes, please go ahead for the pictures. Yes. Yes, please. Go ahead, go ahead, go ahead. Go ahead. Yes. Yes. आपको बैठना पड़ेगा, नहीं तो आप फ्रेम में आ रहे हैं। मुझे मेरा फोन देने, सेल्फी मैं भी ले लूँ। सेल्फी का ज़माना है, सब लोग आ जाएंगे। एक सेल्फी लेना है सर को। यहीं से आएगा। Where are the kids? You can also join, sir, for a selfie. Come, come, come. The modern school kids, please come. Sir, there are more. The modern school boys and girls, come. Yes, yes, yes. Go ahead, go ahead, go ahead. Go ahead, go ahead, go ahead. Why don't you go? Go, 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 go. Get a picture. Go, 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 go. Go, go. Go, go. Please go. Hi. I'm good, I'm good. Thank you for fielding that question. Of course, he he likes all the questions. He's pretty cool that ways. Yes, yes.
Yes. Yes. Thank you, guys. Thank you so much. Thank you. Sir, sir, this way. Sir, this way. क्या इधर आई Conversation this had been with the Honorable Minister. I would request everyone to kindly be seated because we are going to start with our next session, another interesting session, a fun session where all of you are going to have fun, all of you are going to enjoy this. So kindly remain seated and settle down as quickly as possible. That's the advantage of being with the INB minister who has a great Kindly sit down because we are about to start our next session. This is going to be a fun session with our very own Arun Singh, who is going to get you all the jokes, all the fun, a brilliant stand-up that is lined up for you. And this is check. this session is called Finding Humour with Gaurav Kapoor, one of the prominent stand-up comedians. Take over. Osama, thank you so much. So I request everyone to please get back to your seats. We have a fun session lined up with stand-up comic Gaurav Kapoor. So time to hear some jokes and also share some laughs and giggles. Are we good? Are we settled? Okay, just before we start this, can I have a huge cheer so that all of you feel absolutely active? My name is Arun Singh, and now I would like to call on stage stand-up comic Gaurav Kapoor. A huge round of applause. Yay! Hello. कैसे भाई? Please. Okay. Guys, थोड़ा सा एक बार और जोरदार तालियां बजा दो प्लीज. थोड़ा सा हमें फील आ जाएगा. गौरव, बहुत बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस खास प्रोग्राम युवा में. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. युवा मानते हैं आप अपने आप को? भाई अब घुटनों का दर्द का पूछो तो नहीं मानते पर वैसे तो मानते हैं. शाम को हम दोनों की कमर जरूर दर्द होने वाली है, एंड दैट्स द फर्स्ट साइन दैट वी आर नॉट युवा एनीमोर. बट मन से है. और आप बात करते हैं युवा की क्योंकि आपकी बहुत सारी वीडियोस जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, जॉब्स की बात होती है. आप खुद पहले एक जॉब करते थे, नाउ कैन वी कॉल यू एन एंटरप्रेन्योर? कह सकते हैं एंटरप्रेन्योर या फ्रीलांसर इज द वर्ड. आई थिंक फ्रीलांसर इज द वर्ड हु नेवर वर्क्स फॉर फ्री. या दैट्स द टर्म. एक्सेप्ट इन एनडीटीवी शोज. Yes, we have his act also lined up after this, so stay there. I know थोड़ी सी भूख लगनी शुरू होगी, but he'll really fill us up with a lot of laughter. But गौरव, आप जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात बहुत ज्यादा करते हैं. Correct. आप बताइए, एक आपका वीडियो था जिसमें आप कहते हैं कि यार जिनके पास जनरेशनल वेल्थ है, बाप का
कैश है वो ऐश क्यों नहीं करते? आप बताइए, खुद का बिजनेस या फिर जॉब, क्या पिक करना चाहिए एक यंगस्टर को? यार आई थिंक ओवर द पीरियड तो खुद का बिजनेस ही बेटर होता है. व्हेन यू स्टार्ट ऑफ आई थिंक जॉब्स आर गुड टू गेट एक्सपीरियंस, ताकि जो गलती करनी है दूसरे के बिजनेस में कर लो आप, उसको जितना नुकसान देना है दे दो, एंड देन यू आफ्टर यू लर्न देन यू शुड गेट इनटू योर ओन थिंग, बिकॉज ओवर द पीरियड you learn the tricks of the trade. Is that a good, correct phrase? Of course it is. Can you also know about your journey? Like how did you think कि अब मेरे को कॉमिक बनना है? यार मैंने ना जॉब के साथ पैरेलली करा था 2-3 साल ना, मतलब 4 साल. तो when I had enough money, enough savings through my job, then only I started doing full time stand up, because मतलब मैंने सोचा था अगर 1 साल तक मैं कुछ काम भी नहीं करूंगा, 1 रुपया भी नहीं आया तो मैं रेंट दे सकता हूँ, चिल कर सकता हूँ. Then only I started. Realization कब हुई कि मैं फनी हूँ? यार वो तो मेरे को अभी तक नहीं हुई है इतनी, पर ठीक हो गई थी, बट स्कूल में ही, लाइक आई वाज द फनी गाय इन द ग्रुप. Okay. Yeah. And who's funniest in your family? I think I am the funniest guy in my family, because my family is very एकदम वो नहीं होता एकदम पिताजी, वैसे वाला सीन है फैमिली में. तो अच्छा, मुझे लगा था किसी ना किसी से पिक जरूर किया होगा, बिकॉज़ ऐसा होता है फैमिली में, हम किसी ना किसी से ये स्किल उठाते हैं, बट लाइक नहीं यार, आई एम द फर्स्ट जनरेशन of comics in Kapoor funny guy in Khandan. my family. Yeah. Lovely, but your wife is also very funny. Yeah, she is funny. Yeah, she's good. Like, Let's also talk about love and relationship. How important is that for career? love and relationship for career. Yeah. I mean, sometimes if you're a vlogger, then it is fine because people like to watch your family life and all. Then it's good for your career. Yeah, otherwise तो क्या ही जरूरत है यार, career तो अलग है, love relationship अलग है, support मिल जाता है थोड़ा, और क्या. बढ़िया. और वहीं हम अलग-अलग ऑब्वियसली जो मुद्दे हैं उन पर बात करने वाले हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट टेक्नोलॉजी आल्सो. Yeah. आपको अभी तक की क्या यूजलेस टेक्नोलॉजी लगती है? Useless technology. एक पेजर आता था. Do you guys know pager? I think they're too young to know what pager is. These school kids, they have no idea, नहीं? Yeah. Some of them have idea, no? अब मुझे पता चल रहा है मैं बूढ़ा हो चुका हूँ. वंडरिंग ये क्या बुढ़े बात कर रहे हैं पेजर के बारे में. वो टाइम पास चीज थी, सबसे यूजलेस प्रोडक्ट था वो एवर, क्योंकि जब तक उसका मैसेज लोगों पे जाता था तब तक वो बंदा ऑलरेडी घर आ चुका होता था. एंड आपको क्या लगता है सबसे रेवोल्यूशनरी चीज क्या है टेक्नोलॉजी में? सबसे रेवोल्यूशनरी तो आई थिंक यार फोन ही है, क्योंकि उसी ने हमारा करियर बनाया है. बाकी AI आ रहा है, उसको देखेंगे जब आएगा. ओके. वहीं साथ ही साथ ट्विटर पर भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं, हैशटैग NDTV युवा. अगर आप भी यूज करते हैं तो आपके सवाल भी हम तक पहुंच सकते हैं, और उन्हीं सवालों को हम गौरव के सामने भी रखेंगे. कोशिश करेंगे कि ऑडियंस से भी किसी का सवाल ले, लेकिन उससे पहले हमारे जो कुछ सवाल हैं वो हम यहाँ पर पहले खत्म कर लें. देन वील ऑफ कोर्स गो टू दी ऑडियंस. हाउ इंपॉर्टेंट आर लुक्स इन अ करियर लाइक आवर्स? हाउ इंपॉर्टेंट इज वैनिटी? I mean, यार फर्क तो पड़ता है. इन स्टैंड अप कॉमेडी इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आई फील, बिकॉज you are if you're good with your jokes, if you're good with your writing, people come for that only. But in general, in showbiz, looks तो obviously important है. We have seen in the past also. It is difficult for a person with अभी तो बोल नहीं सकते, but it is difficult for a person with ugly face. That could also be problematic, but yeah, that's the best that he could do. Yeah. Okay, but why I ask this is because we're talking to youngsters here who are always on social media, right? And मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एज ही ऐसी है जिसमें हम बहुत ज़्यादा conscious हो जाते हैं about the way we look and our height, or like for guys maybe body shape, size, and of course it goes for both the genders. But आपको लगता है कि आज की generation के पास ज्यादा वो कॉम्प्लेक्सेस हैं, क्योंकि आपके काफी यंग भाई बहन भी हैं. हाँ. यार नहीं, आई थिंक आज की जनरेशन में फिर भी इन्फॉर्मेशन है ना, हमारे पास तो थी नहीं. बट हर वक्त कैमरा के आगे हैं, तो डोंट यू थिंक उसमें कॉम्प्लेक्स ज्यादा ऐड हो रहा है? आई डोंट थिंक सो, कि बिकॉज दे हैव इन्फॉर्मेशन, सो मच इन्फॉर्मेशन है ना कि बॉडी पॉजिटिविटी के ऊपर ये लोग देखते जा रहे हैं, स्पेशली जो अर्बन पॉपुलेशन है. हमारे में तो भाई स्कूल में ऐसा बेइज्जती करते थे ना, मोटा काला सब बोलते थे यार. अभी तो ये सब एकदम खत्म हो गया, कम हो गया. पीपल आर ऑल्सो कंसिडरेट ऑफ यू की ठीक है ये सब वर्ड्स यूज नहीं करने, एंड वी शुड कंसिडर बॉडी पॉजिटिविटी. तो तुम ये सब रीले देखते रहो, कोई टेंशन नहीं है. और आपको लगता है कि अब इनके लिए लेकिन करियर चूज करना भी इजी हो गया है, लाइक करियर लाइक ऑफ बीट करियर्स? लेट्स से अगर 5-10 साल पहले आपने जब कॉमिक बनने का सोचा होगा तो बहुत डाउट होंगे, एंड यू डिड इट विद द जॉब बिकॉज यू ऑलवेज वांटेड दैट सेफ्टी नेट. यू थिंक इट्स इजियर फॉर देम? या इट्स इजियर फॉर श्योर, बिकॉज नाउ दे नो कि अभी सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं है, बाकी बहुत सारे जगहों पे दे कैन मेक देयर करियर्स, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज द इंपॉर्टेंट पार्ट. तो वो सब आ गया लोगों के पास, तो इट इज इजियर फॉर देम, बट टू मेक इट इज डिफिकल्ट नाउ, बिकॉज नाउ देयर इज कॉम्पिटिशन इन दीज फील्ड्स ऑल्सो. आज से 5-7 साल पहले इतना किसी को पता ही नहीं था, तो जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज जो हम तो मजे मार रहे हैं उसके, पर आप लोगों के लिए टफ होने वाला है.
और एक स्टडी है, एक नहीं बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये पॉइंट आउट कर रही हैं कि जो जेनजी है वो ज्यादा दुखी, डिप्रेस्ड, परेशान है. हाँ. Why is that so? And I'll also hear a perspective from you guys as well after we hear his answer. But why do you think that's happening? यार because lot of us are spending too much times indoors, I think, because वही बाहर खेलो वेलो तो ज़्यादा पॉजिटिविटी और वो सब रहता है, पर इंडोर्स में इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं ना, तो उस वजह से फ़ोन पे लगे रहते हैं. देन यू लुक एट अदर पीपल ऑल्सो व्हाट दे आर डूइंग एंड यू फील दैट उसकी लाइफ ज़्यादा बेटर चल रही है, राइट? तो देन यू हैव दैट कॉम्प्लेक्स. फॉर एग्जाम्पल इफ दे सी दैट झुमरू इज डांसिंग एंड नाउ देयर इज 1 million व्यूज, सो समटाइम्स दे विल फील कि अरे ये तो गलत चल रहा है भाई, ये मजे मारते मारते इतना पैसा कैसे कमा रहा है. तो इससे सबका मूड खराब हो जाता है. इनफैक्ट आपके थोड़े 2-4 कलीग्स का भी मूड खराब होता होगा. I've also just hit 1 million followers, guys. Yes, Thanks. please. You can cheer on that. Sorry for this not so subtle plug-in, but you very right. ये number game. Yeah. जैसे मुझे लगता है कि मुझे भी कभी-कभी ये affect जरूर करता है. I know हम ये बोलते जरूर है कि numbers don't matter. Do numbers matter to you? यार हाँ, मतलब when you are into this particular industry, then numbers do matter to us, because whenever you put out a reel, you keep checking कि कितना गया, कितना Or do they गया. matter when there are numbers? When there are numbers, क्योंकि मैं 2015 से YouTube कर रहा हूँ, उस पे 70 views आते थे, and I used to say numbers don't matter. But now when I have, I say numbers. हाँ, फिर अब वो हो जाता है ना कि 1 million जा रहा है, कुछ सडनली नेक्स्ट वाला 2 लाख गया, देने लगे अरे अब क्या खराबी हो गई है मेरे साथ. तो numbers matter. Numbers matter for you sure. get it. Yeah, for sure. But how do you deal with that? कुछ नहीं, अब तो एक्सेप्टेंस आ गई है भाई. वक्त के साथ इंसान सीख ही जाता है. तो मैं अब नहीं भी आया तो ठीक है, नेक्स्ट डालेंगे, नेक्स्ट में बेटर हो जाएगा. एंड प्लस द थिंग इज दैट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दिस काइंड ऑफ इंडस्ट्री. यू कैन नॉट फील कि आपकी हर चीज 2 million 3 million बड़े नंबर्स नहीं मारे. एवरीथिंग कैन नॉट बी वायरल. सो यू कीप मेकिंग योर कंटेंट, देन ओवर द पीरियड समथिंग विल हिट विद द ऑडियंस, देन इट विल बी वायरल. तो इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी. You also do a lot of branded work. Can you give us like some funny insight into what those conversations are like? Because हम सब जो creators हैं, जब जितने भी वो जो corporate वाले लोग होते हैं, हाँ, जो बहुत सारे आई एम श्योर यहाँ पे भी सूटेड बूटेड लोग हैं, बट जैसे ही हम वो सूटेड बूटेड लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करते हैं, सम फनी थिंग्स दैट कम अप एंड द काइंड ऑफ थिंग्स दे से. कैन यू गिव अस एन इनसाइट ऑफ व्हाट दैट गोज लाइक? So I'll tell you, for example, when I signed up for this particular event, so during the conversation on call, they were like, गौरव आपको जो करना है करो, we want you as you are. आपको जितने जोक्स मारने हैं, आपको जो जोक्स मारना है वो करो. आई बाहर मुझे बोल रहे गौरव पॉलिटिक्स मत करना प्लीज. So that was like one incident that happened. It's just that we are live. Yeah. And मैं बता देता हूँ, मैंने गौरव का शो अटेंड किया हुआ है, तो मैं भी काफी ज्यादा डरा हुआ था. I remember last time when I attended his show, I asked him, can I bring my parents? He said no, in caps. मैं अभी भी डरा पड़ा हूँ, क्योंकि किसी मेरे को परफॉर्म करना, मुझे लग रहा है मेरे मुंह से कुछ निकल ना जाए, क्योंकि मुझे आदत लगी हुई है ना, इसीलिए. ठीक है, बढ़िया है. अब अभी आप जब सोशल मीडिया देखते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं, हाँ. पिछले 10 सालों में क्या बदलाव आपने देखा है मेन स्ट्रीम मीडिया में? मेन स्ट्रीम मीडिया में मतलब द होल थिंग यार, अच्छा बोलना, अलग हो गया है थोड़ा. लोगों ने देखना कम कर दिया है वैसे तो, मतलब डिजिटल पे अब ज्यादा ऑडियंस जाती है. डिजिटल पे ज्यादा फोकस हो गया है. मेन स्ट्रीम पे पीपल आई डोंट मतलब मेरी मॉम भी जो पहले टीवी रेगुलर देखती थी, नाउ शी इज आल्सो ऑन ओटीटीज एंड ऑल, शी इज आल्सो ऑन सोशल मीडिया. तो ये तो आई थिंक पिछले 5-6 साल में हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पीपल थॉट कि दिस इंटरनेट एंड ऑल विल बी फॉर यूथ ओनली एंड पेरेंट्स विल स्टे देयर. बट आई थिंक ओवर द पीरियड यू मस्ट हैव आल्सो रियलाइज कि पेरेंट्स हैव आल्सो शिफ्टेड टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर. तो ये हुआ है कि थोड़ी ऑडियंस तो कम हो गई है. सिंस यू मेंशन योर फैमिली, कोई ऐसा कैरेक्टर है आपके घर में, परिवार में, रिलेटिव्स में, जिनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं? लाइक आई पिक अ लॉट फ्रॉम माय डैड. डू यू पिक? आई हैव सीन ऑल I do a lot of dad sketches, but because I think it's really funny, in a sense also. But कोई ऐसा कैरेक्टर जिससे आप इंस्पिरेशन ले रहे हैं? यार मैं ना जिस एरिया में, आई हैव ग्रोन अप इन वेस्ट दिल्ली, तो वहां ना हर कोई एक कैरेक्टर है. Anybody from West Delhi here? Can we hear a cheer? अरे वो बहुत ही शर्मी में हाथ क्यों उठा रहे हो? ये सब साउथ दिल्ली स्कूल वाले बच्चे हैं. No, there is one hand that I saw. Of course, West Delhi is this absolutely colorful character. Yeah, so over there, there are a lot of characters over there. मतलब if you come over there, ना you talk to characters people. like what? कैसे बताऊँ? जैसे आपके पंजाबी डैड वाले कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे, जो रैंडम लोग, जैसे मैंने वहाँ पे लोग देखे हैं जो कि हमें भी नहीं पता, वो बचपन से एक दुकान पे सुबह आके खड़े हो जाते हैं और शाम तक वहीं खड़े रहते हैं, और वो आदमी कुछ नहीं कर रहा है. मुझे पता नहीं आदमी पैसा कैसे कमाता है, बस वो मेरे को पता है जब रावण नहीं बनता दशहरे के टाइम पे, उस टाइम जब वो रावण लगवाता है वहाँ पे कमीशन खा लेता थोड़ी. तो इस टाइप के बहुत सारे लोग आपको वेस्ट दिल्ली मिल जाएंगे, हंसी मजाक करते हुए, स्कूटर पे बिना हेलमेट के बाइक स्कूटी चलाते हुए. और वेस्ट दिल्ली की अपनी एक डाइटिंग प्लान भी है. हाँ, वेस्ट दिल्ली में फूड तो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है दोस्तों. अभी इट्स नो मोर रेगुलर फूड इन वेस्ट दिल्ली. मोमो मिलने शुरू हो गया.
आवाकाडो आ गए हैं, थोड़ा पंजाबी बाग एरिया में आए हैं. अभी विकासपुरी में आने में टाइम लगेगा. Before I move on to next segment, can we have a huge cheer for Gaurav and West Delhi people? Now we have an improv segment where I'll do some lines. You have to complete those. We're calling it improv and we've not discussed it. I'll say one line, you have to complete it. सुबह जल्दी नहीं उठता क्योंकि मेरे को यार सुबह सुबह प्रेशर लग जाता है एंड मैं चाहता हूँ थोड़ा लेट लगे. हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी. मोए मोए. You have to complete this. हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी. मैं वही तो बोला मोए मोए हो गया उसका तो पहले मैच बहुत गंदा मोए हुआ है उसके साथ. रील्स देखने की बेस्ट जगह. रील्स देखने की बेस्ट जगह वॉशरूम ही है दोस्तों, बिकॉज देयर इज एब्सोल्युटली जीरो डिस्टर्बेंस. कंपनीज में एचआर का काम तो यार मुझे लगता है बहुत काम होता है एचआर का. इट इज ऑल फेक नैरेटिव दैट एचआर डोंट वर्क. दे डोंट ओनली मेक रंगोलीज, दे डू रेगुलर वर्क आल्सो. ओवर हियर आल्सो एचआर ओनली बुक्ड मी एंड माय पेमेंट हैजंट बीन क्लियर्ड येट, सो इट्स ओके. गौरव कपूर के शोज में पेरेंट्स के साथ मत आए. एल्विश भाई के आगे सबको बोलना चाहिए यार. आई सेड एल्विश भाई के आगे कोई पुलिस बोलती. पुलिस ने बोला बहुत तेज एल्विश भाई के आगे. इस देश के युवा का इस देश के युवा का कुछ नहीं हो सकता. आप लोगों ने इतनी सीरियस बात पढ़ा रहे हो, इनका घर जाकर उनको यही करना है भाई. ऑल दे वांट टू डू इज वॉच रील्स. शादी का एक फायदा तो होता ही है, बिकॉज यू हैव एक ना एक फायदा तो होता ही है यार. ओके. एज अ पंजाबी मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि हम लोग सब लोग दारू नहीं पीते हैं. There are Punjabis who also don't drink, who have good body, who do proper diets also. And who are vegetarians also. Yeah. Malls में जाते ही मजा आ जाता है एसी में रह करके. Lovely. Now we'll open the floor to the audience. We can have a couple of questions before I move on to the question that we've got on Twitter. Please raise your hands if you have a question for Gaurav Kapoor. There we have two ladies there raising their hand. Can we quickly send the mic to them? Yeah. And guys, आप लोग थोड़ा चिल हो जाओ. ये अभी पिछला वाला सेशन नहीं है. डरना नहीं है, ठीक है? ऐसे एकदम डर करके सवाल पूछ रहे. रिलैक्स, कंफर्टेबल. Hello sir, my name's Ananya Maini. I'm from Aft University, Noida. So, Ananya Rockstar from Aft University. Okay. So my question is, Rockstar में ऐसा एक dialogue था that every artist has one thing in common, which is pain. So I want to ask you, amongst all these stand-up comedians or content creators, what is that one thing that fuels you to, do stand-up comedy or come up with such jokes? यार वो एक जेनरिक स्टेटमेंट है कि तो इट्स अ डिफेंस. ह्यूमर इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ एनी पर्सन. सिर्फ कॉमेडियंस नहीं, आप लोगों में भी फनी लोग होंगे ना, आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, तो वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है. वो पेन कह लो या उसको पीपल कन्वर्टेड इनटू ह्यूमर, राइट? बिकॉज अदरवाइज दे विल हैव टू फेस दैट. समझ रहे हो? जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बोला कि पहले वो बॉडी कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत थी कि आप छोटे हो, आप मोटे हो, वो सब बोलते थे. तो पीपल यूज्ड टू क्रैक जोक्स ऑन देमसेल्व्स ओनली, राइट? टू डील विद दैट, सो दैट पीपल लाफ एंड दे एक्सेप्ट अस इनटू द सोसाइटी. तो एक वो रहता है वो, बट इट्स अ वेरी जेनरिक थिंग. सब में ऐसा पेन वेन नहीं होता. मेरा ठीक है. आई थिंक अरुण का भी चिल है ब्रो. देयर इज नो पेन एट ऑल. ट्रॉमा देयर. बट हाँ, ये जरूर होता है जब भी मैं किसी ऑकवर्ड सिचुएशन में होता हूं तो मैं कुछ जोक क्रैक करके हाँ, ऐसे. इट्स लाइक वो मैसेजेस नहीं भेजते हम, जब भी कुछ रूड भेजना होता है लिख के उसके बाद ही. हाँ. It's that. It's a lot of like, it comes from that space. Next question, please. Hello, sir. I'm Arya Mishra from Faculty of Law, University of Delhi. Hi. So, sir, अभी आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका जो फील्ड है उसमें you have to be cheerful and cracking jokes all the time. Yeah. तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है कि नहीं मन है हंसने का, नहीं मन है जोक क्रैक करने का, पर फिर मतलब कुछ like mood off है? Like how do you deal with all your mood swing, mood stuff, and like how do you make yourself to come and crack jokes all the time? So all the time मेरे को तो 1 घंटे का शो करना होता है, वहाँ जोक क्रैक करने होते हैं. तो वहाँ पे आपको फनी होना पड़ता है. पर इन जनरल पीपल एक्सपेक्ट अस टू बी फनी ऑल द टाइम. तो मैंने उसका एक तोड़ निकाल लिया है. व्हेनेवर आई एम इन पब्लिक प्लेस मैं एकदम मुंह सड़ा के रखता हूँ अपना, ताकि सामने वाले को लगे कि इसका मूड खराब ही चल रहा है. तो इस चक्कर में वो आके मेरे से बात भी नहीं करते. तो इट्स लाइक यू डोंट हैव अ प्रेशर टू बी फनी ऑल द टाइम. यू जस्ट हैव अ प्रेशर टू बी फनी ऑन स्टेज एंड दैट्स वर्क, राइट? यू हैव बैड डेज एट वर्क आल्सो, बट देन यू have to send reports, so you have to send reports. So it's fine. 1 hour you can be funny in a day. Before we move on to the next question, I have a question from Twitter. Aditya Verma is asking, Gaurav Kapoor, how do you ensure your jokes resonate with today's youth while still delivering
meaningful messages that provoke thought and reflection. काफी heavy है. क्या provoke thought reflection? हाँ. मैं I only agree with this guy's first point. Youth से resonate कर लेना चाहिए. Thought provoking यार ऐसा एक pressure नहीं है पता है सब like people usually say कि if you are a public personality you should always give a message. I don't think so to be very honest. मतलब मैं तो भाई अपने joke करता हूँ जो लोगों को मजा आता है और ऐसे. But I think what he's asking is that what is your process? You know, he's asking how to ensure your jokes resonate with youth. So I want to know this, like what is your process? क्योंकि हमारा relatability पे काम चलता है, right? कि joke ऐसा करूँ कि उस पे हर कोई हा करे. But what is your process like? Process is such that we are in the audience only, right? We are amongst the people. So I normally stay amongst the people. ऐसे नहीं कि अगर मेरे follower बन गए तो मैं कहूँगा अब मैं राजा हूँ तो मैं दुनिया से अलग हो गया. We are staying in the people. I travel everywhere. मैं टिक्की विक्की खाने भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है. So you get the jokes from the people only, then you have one observation, then you obviously don't put that observation out, then you write around that observation, you write a full thought around that observation, then you try it with 3-4 people कि ये funny है कि नहीं है, मतलब regular conversation में डाल के, then if it is funny, then we put it out. One last question. Hello. हाँ जी भाई. अभी आप गौरव कपूर ब्लॉग्स वाला करते रहते हो, आपका इतना दोस्त वाला ग्रुप है, सब लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस. उसमें आपके हिसाब से कौन है जो इन रियल भी उतना ही फनी है? ऐसे जरूरी नहीं है कि स्केच लिख दिया, इन रियल भी उतना ही फनी है. और कौन है जो रियल में सबसे बोरिंग है बट लाइक जैसे सब लोग है, आकाश गुप्ता है, अपना बस्सी सर है, राहुल दुआ है, सब में देखते हैं कि आपके हिसाब से कौन है जो सबसे फनी है और कौन है जो इन रियल बोरिंग है पर स्केच में ये लिखते हैं? यार सबसे फनी तो मेरे हिसाब से मिस्टर गौरव कपूर है. आपके अलावा नहीं मैं रियल भी ठीक ही हूँ, मतलब आई एम लाइक अ फनी गाय इन जनरल, बट देयर इज गौरव गुप्ता हु इज ऑब्वियसली वेरी फनी. ही इज रियली फनी इन रियल लाइफ आल्सो, और रियलिटी में बोरिंग. यार ये मैं बोल दूं क्या? बोल देता हूँ यार बस्ती ज्यादा बातें नहीं करता पता हमसे. वो नहीं ना वो मस्त मजे में रहता है, तो ही इज लाइक द फनी गाय ऑन स्टेज, बट इन रियलिटी ही इज लाइक स्लाइटली क्वाइट एंड ऑल. Thank you so very much for your questions. But of course, we've got the funniest guy from that group, Gaurav Kapoor. He has a set lined up for all of us. Thanks, Gaurav, for this amazing presentation. Thank you. बहुत शुक्रिया सारे सवालों का जवाब देने के लिए. Thank you भाई, thank you so much. तो बहुत अच्छा लगा इधर आके. नहीं बहुत फास्ट नहीं हो गया हमारा इंटरव्यू वैसे? ऐसा लगा है आपको, है ना? जिन्हें भूख लगी है शायद उन्हें पता लग रहा होगा. Please, we can set that mic up, but in the end, we are also doing a campaign called NDTV 18 ka vote, where we are promoting. I don't need this. Yeah. Where we are promoting young voters to go out and vote. If you can look into one of the cameras and give out that message for NDTV 18 ka vote. NDTV 18 ka vote. Hi guys, my name is Gaurav Kapoor and I'm a stand-up comedian. This is the message for NDTV 18 का वोट. जो भी young voters हैं, especially जिनका first time वोट जा रहा है, दोस्तों please read about the leader who is there in your constituency and then only vote. ठीक है? पढ़ लिख करके समझ के देना वोट, क्योंकि मैटर करता है. ठीक है? ऐसे नहीं कि WhatsApp forward देख के वोट नहीं करना है. ठीक है दोस्तों? And I'm also vlogging here from the stage. Just wave for my vlog. What's and up? You too. Can we have a cheer also? Lovely audience. Thank you so very much. India has its largest ever adolescent and the largest youth population. More than 50% of India's population is below the age of 25 and more than 65% below the age of 35. Yes, we are the youngest country in the world. But the mental well-being of youth has emerged as a critical concern. This significant and complex issue requires attention and action. To understand the mental health landscape of our country's youth, the several factors that contribute to the mental health challenges, and a lot more. Today, as part of NDTV Yuva, we have with us, let me introduce them to you. We have with us Dr. Amit Sen, child and adolescent psychiatrist, director Children First, Amrita Tripathi, writer and founder The Health Collective, Divija Bhasin, counseling psychologist and founder The Friendly Couch, and Kerry Bharatram, founder and CEO, Tipsy Beauty. Thank you all so much for coming forward to speak about such a critical and important subject. I would like to start with you, Dr. Sen. You have over 30 years of experience dealing with children and adolescents when it comes to psychology, and you've been practicing this for so long. If you can just tell us, to start this conversation for our youth here today, what are the major health issues when it comes to mental health? What are the disorders which you see are most common, and how much has changed in the last 30 years when we talk about the mental health landscape?
Thank you. Thank you, Ambika. So the landscape has changed dramatically. When I started doing psychiatry, which was 35 years ago, child mental health or child and adolescent mental health was in the back burner. Nobody really thought it was an important issue. They didn't think that there were many young people who had mental health problems. If they had behavioral problems, which had need to be corrected through discipline. Over the last 30, 35 years, that's changed dramatically. Now we have an exponential rise in conditions like depression, anxiety, and some others which we didn't see at all 30 years ago, like eating disorders. Eating disorders is again something that is driven by the changes that we see in our culture and the way young people look at their bodies. And so body dysmorphia is yet another very troublesome condition. Then you have substance misuse, which is really skyrocketed. You know, I mean, children who are as young as 11, 12 begin to experiment with substances. By the time they come to class 6 in middle school, they start doing it. And by the time they're, older adolescents in colleges, it's absolutely rampant across the board, right? And then you have deliberate self-harm, because that's another thing that has really come up. I mean, it's not as if there was no deliberate self-harm or suicide in the past. There was, perhaps shrouded in a lot of stigma and all that. But right now, young people have somehow acquired that as a way of expressing their anguish, their pain, their distress. It's a part of the culture. You know, everybody, whenever they go through difficult times, that's the way they want to express themselves. And also, the if I may call it, rates of suicide, they are scary. And unfortunately, India holds the devious distinction of being the country which has the highest rate of youth suicide. In the age range of 15 to 29, we by far, outpace other parts of the world. So these are the common things that we see now. But that's the tip of the iceberg. There's a lot that is happening underneath, which we don't get to know at all. And it's only growing, and it's becoming more and more alarming, like you said. Oh, yes. Yeah. Oh, yes. Yeah. Amrita, if I can just come to you here, you founded the Health Collective about 7 years ago. Tell us, how has the community grown now that we know, that it's just going up, the cases are going up, we're getting to know about a lot of other disorders. Tell us about the community. Thank you so much, and it's lovely to be here. And actually, Dr. Sen is one of the first people I spoke to when I decided to set up the Health Collective, so it's full circle for me. We set the Health Collective up actually based on my work as a journalist, based on my work as a health editor, and covering stories like we discussed, Ambika, when it comes to mental health in the news, in the newsroom. And I still remember, it was about 7 or 8 years ago, actually I saw a tweet from someone I didn't know talking about a friend who was in acute distress sitting in Mumbai, and they didn't know where to reach out for help. And I saw this tweet 2 days late, and I pinged it to say, I'm sure you figured out, who this person can reach out to for help by now. And I was acutely distressed myself to know that they didn't know. And this is a very privileged, English-speaking, urban, it's a metro in India, right? So we started by just saying, okay, let's at least make sure we can get information out there that can be potentially life-saving. For example, anyone watching this, as we talk about things like suicide, and if you're feeling distressed, you need to know that you're not alone, that help is available, and we do have helplines up. So we shared the helplines, and we started as a resource really for credible information. And I think what's changed is these conversations are much more mainstream now. I don't think we'd have had a panel like this 7 years ago on a topic like this. What ended up happening with the Health Collective, though, was something very beautiful and organic, I feel, because 3 people, I still remember, sent in their stories. It was not what we intended to do, but they sent in stories talking about what it was like to live with bipolar disorder, schizophrenia, and depression. 2 of those didn't want to use their names, 1 person did. And literally through word of mouth, we now have about 500 stories on the site, comics, we have artists, and you do realize, even through these interviews, and when, some of you are watching this panel or listening to us here, mental health is something that affects everyone. There is no us and them, right? So we might talk about the diagnosis, or we might ask Dr. Sen about the statistics and say, how common, how prevalent are these disorders? But each and every one of us does have mental health. And I think learning with the community as it grows, the pandemic is something where we saw, of course, a spike in search, a spike in interest around things like anxiety. And I think at this point, having reached about 300,000 people, we're like, okay, what's the next step in this kind of evolution? So when you say from 3 stories to 500 plus, that also means that people want to have conversation. I mean, obviously they're trusting, but that also means that they want to put out their stories, which is important. Divija, I want to come to you here and ask you, I mean, you're on Instagram known as the Awkward Goat Tree, right? Why did you choose social media as a way to communicate with people? Because sometimes, it can get tricky. And how has the response been? What are the kind of queries that you get from, people who are reaching out to you through social media? So I
I turned to social media because it's just fun. It's a nice creative way to talk about mental health. I think we need to normalize the conversation around mental health by making it more fun and entertaining, because mental health is not just sadness, depression, anxiety. Those are important parts of mental health, but it's also about how you live life, what parenting is like, education, these kind of conversations. We never talk about these things when we talk about mental health. We somehow only talk about depression and anxiety as the core things, which is not a bad thing, but we need to see the other side as well, which is why I turn to social media. And I don't just talk about depression, anxiety kind of problems, suicide. I also talk about the things that we go through in daily life, like the experiences that we have in school. So that is a huge part of our mental health and how we are brought up. And what was the other question? Yes, so what are the kind of queries you see? Like, when other youngsters reaching out to you, especially if I ask you about the youth, what are their problems really? A lot of young people actually message me and say that they want to take therapy and they feel the need for it, but their parents are not allowing them, which is really sad, because it's as if parents see therapy as a really bad thing. Like, there is this notion, right, that therapy is a Western concept and that is not for the Indian population. But somehow the youth recognizes this, and unfortunately the obstacle in the way is parents. So actually, when we talk about youth mental health, we need to talk about parents as well and not blame them. It's not their fault. When they were growing up, there was no concept of mental health. We need to validate the problems of the parents and understand their expectations as well. But definitely, we need to have parents in these conversations, because they have the power to improve the mental health of not just their own children, but also of the youth of the whole country. Absolutely. I think that's a very important point. I think as parents, even we need to understand children, and I am going to come to that question later because I also have a question there. Kerry, I just want to ask you here. I mean, of course, you're running Tipsy Beauty, doing really well. If you can take us through your journey, when you were at 70, you were diagnosed with depression. I mean, first of all, thank you for coming out here, speaking to our youth, encouraging all of them. If you can just take us to a story, I think a big round of applause for Kerry, because like I think Amrita said, out of the 3 stories which came, only one person gave out a name. So for Kerry to come here in front of all of us, and I think to encourage so many people who need to talk out there, please take us through your journey and tell us about it. Thank you so much. So my journey started towards the end of school. I was in class 12 and I started having these panic attacks, and we didn't understand what it was. And I remember I went to my school principal because my dad didn't know what to do with me, and she was the one who first said that I think you need to see somebody because this isn't regular panic before an exam. This seems to be something more. So then we went to Dr. Sen and they diagnosed me with first anxiety and then depression, and I kind of lost interest in school. I stopped meeting friends. I became very, very self-negative. I just didn't want to wake up the next day. I just didn't want to exist. And it kind of took a turn and became really bad really quickly. I'd gotten into my dream college. I'd worked hard. I couldn't go. I had to let it go. I took 2 gap years, and everyone was like moving ahead and I was moving backwards. I couldn't leave my house. I needed my parents for everything. I was just moving steps and steps backward. And eventually I was also diagnosed with bipolar. So it was just kind of seeming hopeless. We tried a lot of things and nothing worked. And eventually, after 3 years or so, I did go to college in the UK, and that really helped me kind of get back into normal life. And even though there was no pressure on me for grades or anything, it was just about living in the society again after, 3 years of like a sabbatical from life. And then I was diagnosed with ADHD, and that for me was the biggest relief. It was a diagnosis that I was very welcoming of, because it explained everything that I didn't like about myself, and it also explained why my depression started, which is what we spent years trying to figure out. And that ADHD that didn't let me keep up with my classmates, that I was not able to do things like them, all of that led to like lack of self-confidence that led to depression. So
once we figured that out, I think I really started to get better. And I also, in that time, wrote this book. In fact, I didn't write it as a book. I used to use, in therapy, I used to talk about what I was feeling through metaphors. And one day, my therapist, who is Dr. Sen's wife, she told me that, why don't you put this all together? Because it will be really helpful for me to share it with my other patients. And that's when I got the idea. And of course, everyone was very hesitant about publishing a book about depression, because even my parents, who were like very forward thinking, thought I'd get labeled and this is what I'd get known for. And I had no problem with it somehow. And I felt like if somebody could get helped because of what I went through, then what I went through wouldn't be in vain, and that it would make it more worth it. So I bit the bullet and published this book. And luckily the response has all been positive, and everybody has been really happy and encouraging, and I think really made me feel good about the fact that I'm being so open about it, and I hope that it can help people. I'm sure Anne Kerry has authored a book called C is for Cat and D is for Depression. So I would like to mention that, like you rightly said. So that's the book. I think, yeah, like you said, you had parent support who actually took you to a doctor, I mean, a counselor, and, and that's how you started therapy. But very important is, I think, the diagnosis. And something, before I come on to my next question, just a quick question on ADHD. Dr. Sen, we are hearing that sometimes ADHD goes undiagnosed and it can lead to issues. And the cases are increasing across the world, not just India. Yes, indeed. Am I audible? Oh, yeah, now I am. So I think ADHD is a condition which has been misunderstood for decades now, and it's increasingly we find that people who are very bright, intelligent, capable may have traits or symptoms or signs of ADHD, which can then begin to interfere with the way they want to do things, perhaps education. Then it begins to affect their self-esteem, as Kerry so eloquently expressed. And then if it's untreated, if it goes unnoticed, eventually it can lead to many other mental health difficulties, which are really complications of it. So right now, in the adult population, people who visit psychiatrists often have a pre-existing condition which they have actually lived with throughout their childhood and adolescent years. And because of that condition, they've firstly developed a very negative view of themselves, and the world around them has also treated them very differently, calling them lazy, good for nothing, a waster, not trying hard enough. Yeah. Judging them without really knowing why. Absolutely, absolutely. And that happens all the time in our society. We're a society where we are highly competitive, we're looking for success in young people very early in their lives. So all those kind of things begin to impact you, and then eventually a range of other disorders then get associated with ADHD. So it's vital that we understand it amongst parents, in schools, all educational institutions, in workspaces which actually, employ young people and who might have their own struggles if they have not been picked up or diagnosed early enough. Yeah, so I think the important is to find out, identify the issue. Amrita, again, coming to numbers, you've been a journalist for 15 years, and every journalist, numbers, data, facts play a very, very crucial role. We were talking about suicides, right? Dr. Sen said that over 20 kids are dying every day in our country because of suicide. Where are the gaps, really? You've also written, your latest book was on suicides. Where are the gaps? Yeah. No, so I did co-author a book called Life Interrupted with 2 senior psychiatrists on suicide. And for me, what was fascinating was actually that in India and South Asia, mental health isn't the key determinant for suicide. It's a multifactorial, very complicated issue. We have seen that India's supposedly, 20% of the world's suicides, as Dr. Sen said, a majority of young people in our country are taking their lives. And I think the fact of the matter is the numbers themselves are underreported, right? So that number 20, it is likely much higher. For the longest time, suicide was a criminal offense. It was decriminalized a few years ago. But as a result, your reporting is also through the National Crimes Bureau, right? Yeah. Your reporting is basically how we get access to these stories. I am obsessed with numbers and data, like you just said. I think, look, 3% of the population having anxiety, 1 in 4 globally having some sort of mental health issue. But it's after working with multiple people, multiple stakeholders,
stakeholders, talking to a lot of young people, I realized, Ambika, I think it's journalists who are obsessed more with data, statistics, and facts. Most people want to hear stories. So what we just heard, for example, I've lost track of the number of people, and I'm sure this happens to you all the time, people coming up to you afterwards to say, you know what, I read your story, I heard you talking, I felt less alone. And that really shifted my perspective. And that's what I think really leaves an impact. Like that's what I said, it's, the way Kervi's come and spoken, the courage, I think that's what matters. Exactly. If I can come to you, Divija, you said something about therapy. Just going back to that, right? People have misconceptions about therapy. I think the first step to actually think that one needs a therapy is a tough decision. Can you tell us some misconceptions about therapy? So the first misconception is that only people who are crazy or mad need therapy. I don't think so. I think everyone is crazy in some way or the other. And the word crazy is not derogatory, like it's used as an insult. And that word actually means someone with mental illness. So the concept is that people who go to therapy are weaker and lesser than the normal average person. But the thing is, everyone has anxiety at some point. It just becomes a disorder when it's really extreme. But you can also need therapy. Even needing therapy is like the wrong terminology. Just needing support, professional support from someone who knows what they're doing and has the experience. So the misconception is that not everyone can go to a therapist. But I personally think everyone can need therapy at some point. We all struggle at some point. We might not get depression and we might not feel suicidal. But that doesn't mean that support will be useless, right? Like the way we all go to a doctor at some point. We all don't all have diseases at all times, right? But we all go at some point. In fact, before I come to you, Kervi, I want to ask Dr. Sen something. You said we all go to a doctor at some point. I think this is something which we all really need to think because, when we're looking at physical health, the minute a child a mother conceives, from the womb, you're taking care of the child. You're telling the mother, eat well, then you say, okay, have your folic acid, then you take care of once the baby is born, then vaccination, you go to the pediatrician. Dr. Sen, we're looking at the physical aspect of a child, but it is proven that physical and mental health is connected, very deeply connected. What about the mental aspect of a child? We're not even thinking at that level. Absolutely. In fact, before I start answering the question, I just want to reflect on all that has been said. Already we are becoming aware that mental health difficulties, challenges are othered. They are looked at derogatorily. So it's dehumanizing to go to, a shrink and get medicated for most people. And that is why there is this reluctance. I think COVID has taught us that it's not you versus me, or it's not only those people who have mental health problems. In our experience during COVID times, and we actually opened our services for many young people who were stranded in their jobs, they lost their fledgling jobs, or they got stuck in a hostel for months, weeks and months together. And they were very, so-called very successful, very capable kids who did not have any mental health problems before this struck them. But so many of them went through depression, anxiety, eating problems, and self-harm behaviors as well. And that, for I think the larger community, opened this idea up that it can happen to anybody. Indeed, what Amrita said is so true, that all of us go through some mental health struggles or the other, just like we go through financial struggles, physical health struggles. Like for instance, and because this has such a stigma, it weighs so heavy on us, that we don't talk about it. For instance, as to answer your question, that for children, even before they're born actually, we take care of mother's health, we take care of vaccinations, we make sure that the birth is normal and safe. Then we take them through vaccinations, we look at diet and hygiene, we constantly talk to them about the health and what to do. The moment there is a question mark about physical health, we rush them to a pediatrician. We do all that, isn't it, right? If you look at it from the mental health aspect, what do we do? Are we even aware what needs to be done so that children do not begin to feel stressed out, they don't know how to cope with things, they do not develop the so-called resilience that we talk about often in mental health, where you learn how to understand your own self, you learn your responses to the world outside, and you begin to cope with it. Yeah. None of that is actually spoken about, none of that is taught, none of the emotional literacy that should be, I believe, mandatory in schools and homes everywhere is just not mentioned anywhere. And that is the reason why we reach a place where mental health and suicide is skyrocketing is because we haven't addressed the things that lead up to it. Yeah. And so that's where we need to look now. So it's a different aspect, and that vertical needs to be taken care of, from breaking the stigma to looking at
all the insights. Yeah. Very quickly, I want to ask you, when we talk about, there was a report that Gen Z, the millennials, they have more stress. Why do they have more stress and how should they cope with this stress? I don't know if they have more stress, or now at least people are aware that the stress is a problem and not something they should be okay with and deal with. I think there is a lot of stress like in terms of this path that you need to follow, and you need to be ahead, and you need to come first in school, then first in college, then get a job. And that pressure, a lot of the times the parents are putting, and also the peers, because I've noticed even when supposing my parents told me, don't worry, it's okay, I didn't want to sit out of the exams no matter how I was feeling because of what my friends would think. So there's a lot of pressure from friends, from parents, from teachers, from everyone, and social media, of course, because everyone is putting their best foot forward on social media and only showing the positives, and you want that for yourself. And even you're only showing the positives, but you don't realize that, it just creates this unrealistic expectation. So I just think but I feel like COVID has made a big difference in terms of awareness. I think people are accepting their stress and their mental health issues and other people's a lot more post-COVID. Yeah. So I think we are running short of time. Quickly, a line or, sorry, Divija, you want to say something? So one quick line or closing remarks from each one of you, especially since we have the room full of youngsters here. Okay, I just wanted to say that we often think that the Gen Z and the youth have more anxiety or more stress than other people. I just feel like they have the vocabulary for it. I think old people also go through anxiety. They call it ghabrahat in our culture, when actually that is anxiety. So we need to acknowledge that everyone goes through it. It's not increased in the young people. They're just more aware. They're more aware, and it needs to be addressed. Yeah, and I think if you have a show of hands, who's ever felt stressed in their life? I mean, that's pretty much all of us. And I think, including on this panel, we're not exempt from that. I would say just one message is just know whatever you're going through, you're not alone. Help is out there, whether it's through stories, whether it's through experts. Just know that there is a community. And sometimes, online is where you find your community if you feel there are barriers to getting help. And sorry, I'll slip in another one. It doesn't cost us anything. Everyone in this room, we can all learn to be kinder to each other. We have no idea what people are going through. Absolutely. And I think talking is the most important. Dr. Sen? Well, I want to highlight the very warped model in mental health that we follow. It's hierarchical, it's expert-driven, and it's a biomedical model that we follow, which we have borrowed from the West. Actually, in our culture, there are many other things that could be helpful. Besides, I think the youth, who are a lot more aware, are willing to talk about it, should take center stage, especially for their own health, and should take it up with the various stakeholders and make a claim that this is our space, and we want our mental health to be taken care of. We want the kind of, infrastructure that is essential for us to feel good about ourselves, towards our well-being. And I think, and when I go to educational institutions, including schools, colleges, etc., that's what we talk about. We talk about including parents, teachers no doubt, but including the youth as well, to hear their voice, to understand what they're going through. Sometimes they are much better at knowing about their own lives than anybody else's. Absolutely, yeah. I'll leave the last word to you, Kerry. So I want to say something to the people who are actually going through something right now. Just remember that right now everyone keeps telling you that it will get better. There is a light at the end of the tunnel, and it sounds amazing, but it's difficult to believe. But when you see people in front of you who have gone through it and come out, I think that should be an example that you can do it too. And don't expect a radical change that one day everything will be rainbows and sunshine. Like you have diabetes or something, where you learn to live with it and manage it. That's what mental health is for me. For me, depression didn't go away. Today I'm running my own business. I've written books. You would think I'm successful, but I still live with these things. But I'm living a good life, and I've learned to manage it, and you could say, come out of it. But it's a part of me, and it's a part of you that makes you very strong. So it will get better, and just hang in there. Thank you so much. I think that was really that was really needed. A big round of applause, please, for all our panelists, especially for Kerry. Thank you so much, Dr. Sen, Divija, Amrita, and Kerry. Well, like Dr. Sen had said, yes, today's youth will be tomorrow's inventors, creators, builders, and leaders. Despite growing awareness, there is still a significant stigma attached to mental health issues in India.
Promotion, prevention, therapy, and treatment will only happen once the disorder is diagnosed, and diagnosis will only happen if you identify and acknowledge it. So to break the silence and stigma around the mental health of our young people, we need to actively engage educational institutions, teachers, and parents to initiate an open dialogue around it and encourage children and our youngsters to come forward and talk about their struggles, because mental health is just like physical health. Everybody has it, and we need to take care of it. Thank you all so much for watching. Thank you all so much. Thank you so much. Thank you, Kerry, for really sharing. What a your fantastic conversation that we have had right now. Some very scintillating conversations, some laugh out loud moments. Yet there is plenty to look forward to. Influencers, there are going to be disruptors, stars, and plenty of music as well. But before we get to that session, we would like to invite all of you to join us for a short lunch. We should be back at 3:10.
Yes, yes. Yes, yes, I can. Yes, तक आ I जाएंगे. can. I can. किसी की किसी की आवाज जाएगी बाहर. किसी की आवाज जाएगी बाहर. So मेरा माइक कौन सा है? Yeah, I did. Kumar sir. Yes, sir. Sir, how are you, sir? So good to have you here. समृद्धि. Hello, ma'am. ये इनका बहुत बड़ा हाथ है युवा. Please, sir. I'm glad that you're here, and Prashandi obviously is absolutely wonderful. He's going to have great conversations with अरे you. भाई आजकल युवाओं का जमाना है. Sir, आप भी युवा हैं. As long as सबसे ज़्यादा युवा मैं और कुमार साहब है. yeah, as long as you are yuva from here, rest everything is fine. Yuva with experience. I think that is a great way to explain it. Yeah. Hello, I'm Osama. I'm going to be hosting that session with you guys. So I'm sure काफ़ी fun आने वाला है. We have other people also on that panel, and काफ़ी मज़ा आएगा. And hopefully आप लोगों ने खाना वाना खाया? You've had lunch already.
की आवाज़ आ रही है? हाँ, ओके. Check, 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 check. Check, 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 check. Check, 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 check. Check, 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 check. कौन है वहाँ पे? भाई तू है? ये माइक 10 का वो ऑडियो बढ़ा दे. Check, 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 check. Check, 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 check. Check, 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 check. Check, 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 check. वही उसी के लिए कर रहा हूँ. Check, 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 check. Check, check, check. Ladies and gentlemen, I hope you have had your lunch. We would request you to please assemble inside the hall. I would request everyone to please come inside the hall. We are just about to start in a short while from now. There is a lot lined up. Great conversations, great performances. So I would request everyone to kindly be back and settle down so that we can start with our next session. वंदना वंदना
उसामा, बोलो जिन लोगों की फिल्मों में आना चाहते हैं वो जल्दी से अंदर आ जाए। सीरियसली। Hello, check, one check. Hey, check. Yes, okay. अभी आएगा सर। एक नंबर। चेक, चेक, वन चेक। हे, चेक। ठीक है। ठीक है ना? Hey, check, one check. Hey, check. Okay. नमस्कार, कॉन्क्लेव की बात करें या एनडीटीवी युवा की बात करेंगे हम। और युवा की अगर हम बात करें तो ज़िंदगी का कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत अहम है। और ख़ास तौर से जब बात होती है चाहे राजनीति की बात करें या फिल्मों की या हम बात करें म्यूज़िक की, तो बिना युवाओं की नब्ज़ जाने फिल्में बनाना और संगीत बनाना बहुत मुश्किल है। और इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं कुमार तौरानी साहब, जो कि टिप्स म्यूज़िक और टिप्स फिल्म के चेयरपर्सन हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले ये पूछूंगा आपसे कि युवाओं की हम बात करें, जो लाइन मैंने बोली कि युवाओं की नब्ज़ जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप इतने युवा होने के बाद युवाओं के साथ किस तरह से जुड़े रहते हैं? प्रशांत जी, थैंक यू वेरी मच। आप हमको बुलाया यहाँ पर, एनडीटीवी का भी शुक्रिया। जो युवाओं की नस्ल बेसिकली क्या है, मैंने पहले से ये सोचा हुआ है टिप्स पे कि हमारे जो भी हमारे साथ जो काम करेंगे ना, सब युवा होंगे जी। तो वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है हमारे बिजनेस में। एंड आप जो बिजनेस में हो, म्यूज़िक में या फिल्म्स में, वो आप क्या चल रहा है मार्केट में, क्या रिलीज़ हो रहा है और कंपनियां क्या कर रही हैं, आप उस पर नज़र रखो, नज़र बनाए रखो, देखते रहो, अपने आप को अपडेट करते रहो, तो आप अपडेट रहोगे। और मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट को सिलेक्ट करना, म्यूज़िक को सिलेक्ट करना, ये थोड़ा एक्सपीरियंस के हिसाब से आ भी जाता है। हम इस बिज़नेस, मेरे ख्याल से हम जब दो भाई थे, यंग थे, रमेश एंड मी, हम कोई भी फिल्म, जब हम 14-15 साल के थे, तब से कोई भी फिल्म उस वीक में रिलीज़ हुई है तो हमें देखनी है। दैट वाज लाइक अ कोर्स है कि 2 पिक्चर लगी है तो 2। मॉम डैड से बहुत झगड़े होते थे। कितने साल के थे आप? 14-15 साल का। मैं 15 साल का हूँगा, वो 13 साल का था। बंक करके जाते थे स्कूल कॉलेज? नहीं, कॉलेज तो गए ही नहीं, बहुत बंक किया, मतलब बहुत। मॉर्निंग शो में तो रोज पिक्चर ही देखते थे जी। तो नहीं, वो तो बाद में ना, वो तो बंकिंग तो बाद में शुरू हुई। बट पहले मॉम डैड से बहुत झगड़े होते थे कि क्यों पिक्चरें देखनी है तुमको, ये काम आएगा क्या? तो वो देखिए वही काम बन गया, काम आ गया। लेकिन मैं इससे पहले बहुत सारे युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों से जानना चाहूंगा। आप जरा हाथ उठा दीजिए, आप में से कौन कौन लोग हैं जो फिल्मों में और म्यूजिक में जाना चाहते हैं, गाना सिंगर बनना चाहते हैं या फिल्म्स में जाना चाहते हैं? देखिए एक हाथ उठा, बाकी सब शर्मा रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है टीवी कैमरे इनके सामने है और घर में मम्मी पापा देख लेंगे और डांट पड़ेगी कि कहाँ बेटा फिल्मों में जा रहे हो। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा कि फिल्में सेलेक्ट करना, आपने बात की, आपने म्यूजिक की बात की, फिल्में आजकल जैसे आप प्रोड्यूसर भी हैं, तो सबसे एक सवाल अहम ये आता है कि एक जमाना था कि लोग 4-4 शिफ्ट में काम करते थे एक्टर्स, और आज की डेट में एक एक्टर 4-4 साल में काम करता है। तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? और ये बहुत सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं ये गॉसिप मैगजीन्स पढ़ते हैं और उन मैगजीन्स में कितना सच होता है कितना झूठ होता है पता नहीं, बट आप बताइए। मेरे ख्याल से आजकल के जो एक्टर है ना, थोड़ा डरते भी हैं। किस बात से? उनको डर है कि फ्लॉप नहीं चाहिए किसी को भी। बट मेरे ख्याल से हिट एंड फ्लॉप इज पार्ट ऑफ लाइफ। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि आपको दबा के काम करना चाहिए। एंड एक हद के बाद आपकी अगर 5-10-12 पिक्चरें आ गई है, फिर आपको फ्लॉप है या हिट है मायने नहीं रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आज जितने भी यंग एक्टर्स हैं वो ऑलरेडी उस मुकाम से बाहर चले गए हैं। अगर उनकी 2-3-4 पिक्चर कभी फ्लॉप आ भी गई तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो मुझे लगता है कि एक्टरों को दबा के पिक्चर नहीं करनी चाहिए. इट्स अ बिजनेस फॉर देम, फॉर ऑडियंस, फॉर जो फिल्म इंडस्ट्री में इतने लोग काम करते हैं उन सब के लिए. तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा कि अगर वो बहुत ज़्यादा फिल्में करें. जितने भी यंगस्टर्स हैं ना, इनको बड़ी एक उत्सुकता होती है ये जानने की. जब भी जैसे मैं मिलता हूँ, शायद आपसे भी जब भी मिलते होंगे तो लोग पूछते होंगे कि अलग अलग तरह के सवाल आते हैं. सबसे अच्छा इंसान एक्टर कौन है, या सबसे अच्छा म्यूज़िक का कान किसका है. तो मैं आपसे पूछूं इन लोगों की तरफ से कि आपने इतने साल इंडस्ट्री में गुजारे हैं, कौन सा ऐसा एक्टर है जो वाकई में म्यूज़िक की सेंस बहुत ज़बरदस्त है जिसकी? एक्टर की सबकी अच्छी है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि सब सी क्या है ना, हमारा जो बिज़नेस है ये क्रिएटिव प्रोसेस है. इसमें मेरे ख्याल से सबकी इन्वॉल्वमेंट होनी ही चाहिए. भले वो कंपोज़र है, वो तो पहले कंपोज करेंगे, लिरिक्स वाला लिखेगा, फिर डायरेक्टर का इम्पोर्टेंस है, बट अल्टीमेटली एक कलेक्टिव कॉल होता है जो सब लोग लेते हैं. तो वी बिलीव इन दैट कलेक्टिव कॉल. एंड मेरे ख्याल से अगर आप टिप्स की अगर फिल्में देखें, जितनी भी हमने पिक्चरें बनाई है, भगवान के दया से 85-90% हमारी बहुत सारी फिल्म्स हैं. सोल्जर है, अभी मैरी क्रिसमस रिलीज हुई है हाल ही में. उससे पहले रेस का पूरा जो फ्रेंचाइज है, अजब प्रेम, रमैया, फिल्म्स की फिल्म्स हैं ये. या जी, भूत पुलिस हुई थी. तो फिल्में तो हमारी सक्सेस ही हैं, पर अगर हमारा म्यूज़िक का आप देखोगे, जितनी भी हमने 50 पिक्चरें बनाई है, सबकी म्यूज़िक अच्छी है. तो वो मेरे ख्याल से कलेक्टिव एफर्ट है, इसके लिए ये ऐसा हो पाता है. बट कितना ज़रूरी होता है कि जो इस इंडस्ट्री में है, म्यूज़िक इंडस्ट्री में, आप जैसे शख्स, उनको म्यूज़िक की समझ, सेंस, या खुद कई बार गुनगुना भी लेते हैं आप? नहीं, गुनगुना लेते हैं. गुनगुना तो मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी गुनगुनाता होगा. दैट्स वाई हमारा जो म्यूज़िक है वो बहुत ही बड़ा लिरिकल वैल्यू है उसमें. अगर आप गाना जब भी 2-3 बार सुनोगे, आपके माइंड में बैठ जाता है. आप भले गा नहीं रहे हो, लेकिन आपके मन में वो गाना चलता ही रहता है. तो मेरे ख्याल से वो बड़ी हमारे इंडियन म्यूज़िक की खासियत है. तो वो इम्पोर्टेंट है. मैं गाता नहीं हूँ, लेकिन मैं गुनगुनाता हूँ. आपको मालूम है मैं आपको गाने के लिए बोल देता, इसलिए आप शायद पहले बोल दिया मैं गाता नहीं हूँ. लेकिन मैं आपसे पूछूं कि कई बार ऐसा होता है कि जब आप गाना बना रहे होते हैं, कंपोजर्स ने बना दिया, लेकिन प्रोड्यूसर्स खुश नहीं होते, लेकिन वो गाना जब रिलीज होता है तो वो आपको चौंका देता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा हिट हो जाता है. जैसे पता नहीं कितने लोगों को मालूम होगा, एक फिल्म थी डॉन में गाना था खाई के पान बनारस वाला. वो गाना फिल्म में था ही नहीं, वो बाद में जब फिल्म बनी उसके बाद डाला गया था. आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि कोई गाना जिसमें आप को लगा कि नहीं यार मैं अभी इतना खुश नहीं हूँ उससे, लेकिन वो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया? मुझे इमीडिएट याद नहीं आ रहा है ऐसा, पर ये हुआ होगा. ये तो कुदरती है कि हमेशा सब लोग एक पेज पे नहीं आएंगे, बट हम कभी कभी फिर हम कंपोज़र के और डायरेक्टर के विजन पे भी जाते हैं कि नहीं, अगर इसको इतना पसंद है, लेट्स गो विद दैट. वो रिस्क लेना पड़ेगा और लेना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जी, लेकिन म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक जो सबसे बड़ी बात है, जितनी भी यंग जनरेशन बैठी है अभी, सब लोग यूट्यूब पे, फ़ोन्स पे म्यूज़िक सुनते हैं. और एक ज़माना था जब गिने चुने सिंगर्स हुआ करते थे. लोगों को, हमको याद है किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश साहब, या 90s तक भी आ जाएं, हम 2000 तक भी आ जाएं, सोनू निगम या फिर कुमार सानू जैसे लोग. क्या वजह है कि अब वो छाप नहीं छोड़ पाते म्यूज़िक डायरेक्टर्स, जो सिंगर्स होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. अरिजीत हैं, आतिफ असलम हैं, बेनी दयाल हैं, कुछ सिंगर हैं अच्छे जिन्होंने अपना, नेहा कक्कर हैं, श्रेया घोषाल हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना नाम बनाया है. मुझे लगता है कि सिंगरों, अगर किसका नाम नहीं होता तो शायद मे बी उसकी प्रैक्टिस में कमी है या उसके रियाज में कमी है. तो दे हैव टू प्रैक्टिस. अभी क्या है, इतनी आप 4-5 घंटे तो आपके इंस्टाग्राम पे निकल जाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा यूट्यूब पे निकल जाएगा. तो ये आपका टाइम कहाँ है? तो ये सब चीज़ें, बट वो बेसिक तो आपको करना ही पड़ेगा. आपको जो मेहनत है, आपका जो काम है, वो तो करना पड़ेगा. तो मेरे ख्याल से कोई अगर सिंगर अपनी रियाज करता है, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू करता रहता है, अपने वॉइस को डिफरेंट तरीके से मोल्ड करता है, तो मेरे ख्याल से सर्वाइव करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इंस्टाग्राम कितना ज़रूरी है? रियाज से ज़्यादा ज़रूरी है या रियाज ज़रूरी है? मेरे ख्याल से तो पहले रियाज ज़रूरी है. इंस्टाग्राम भी ज़रूरी है, बट दैट इज़ कमिंग लेटर. वो बाद में मार्केटिंग के लिए आता है. लेकिन मेरा ब्रेड बटर तो शायद पहले रियाज है. जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने साल आपको इंडस्ट्री में हो गए हैं, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी चीज़ है जो म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप चाहते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए, या फिल्म इंडस्ट्री में नहीं होनी चाहिए? दोनों में बता दीजिए. मेरे ख्याल से जो चलता है ना, वक्त के हिसाब से हमें चेंज करना होता है. और मेरे ख्याल से एक कैसेट और एक सीडी का टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था वो भी.
लेकिन अब का टाइम भी बहुत अच्छा है। अब एक बात बहुत अच्छी है मेरे ख्याल से म्यूज़िक के लिए पर्टिकुलरली, कि जितने यहाँ पर हॉल में हम बैठे हैं सबके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि आपको अभी अगर कोई गाना याद आया तो आप अभी का भी सुन सकते हो और उससे मुझे पैसे मिलेंगे जी। तो वो बहुत अच्छी बात है। आप प्लीज़ सुनते रहिए म्यूज़िक। एंड दूसरा, फिल्मों में भी मुझे लगता है कि फिल्में भी मेरे ख्याल से जो अच्छी पिक्चर होती है तो ऑडियंस तो देखती ही है, तो ऐसा कुछ है नहीं ऐसा कुछ। जाते जाते एक चीज पूछूंगा बस आपसे कि आपकी जेब में पैसे आने बढ़े हैं जब से ये डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू हुए हैं? बहुत बड़े हैं। भगवान की दया है। रियली इट्स रियली गुड टाइम फॉर इंडस्ट्री एंड जो इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, आर्टिस्ट हों, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिक वाले हैं, सबके लिए बहुत अच्छा हुआ है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू जी। एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए। Have that interaction as well with Akshay and IP Singh. We'll have them in a short while, and we'll try to get your questions as well. We are good. So now we'll invite Akshay and IP Singh on the stage. A very warm welcome. Give them a big cheer, guys. Hello. Hi. Welcome. Hello. Welcome. This one? I use this one. Hey, check, check. Hi, Akshay IP, a very warm welcome. So, एक छोटा सा introduction. आपने वो गाना तो सुना ही है, जेड़ा नशा. Of course, that's the gentleman who's sung this, and Ranjha also, and that's the gentleman who's composed it and who's been brilliant with every single track. So, एक बार उस fact के लिए जोरदार तालियां. And I don't know, so जो Instagram पर भी हम audio tracks use करते हैं, तो एक मसाबा का भी track था, रंजन आया. Again, these are the faces behind that. Yay! So great work there. First, I want to understand, you go by the name IP. What does it stand for? I think in this world there are only two things it can stand for, Inderpreet or Inderpal. So I'm Inderpreet. With of course your look, definitely there are no doubts there. Yeah. So in this case it stands for Inderpreet. Okay, and why did you think of naming yourself as IP? I didn't name it, man. People started calling me IP and it was easier. I think it's nice, unique. एक बार सुनता है कोई तो भूलता नहीं है. So yeah. Right. अब बहुत सारे सिंगर्स और कंपोजर्स के साथ में ये देखा है कि वो इंडी सीन होता है एंड देन देयर इज मेन स्ट्रीम बॉलीवुड, बट आप दोनों ने दोनों में महारत हासिल की हुई है. सो इज देयर अ डिफरेंट अप्रोच दैट यू गाइस टेक every time a project is there? For example, if you're creating for Bollywood, let's say, or Hindi film industry, your approach is different, or you just go with an artist's mind and it's a plain slate? Definitely, when we're approaching a song with the independent set of mind, then there are no boundaries, right? Also, there is a different approach. Exactly. And जब आप movie के लिए करते हो, then there are a lot of people involved. Firstly, there's a film involved, there's a script involved, there are actors involved, and there's a storyline which the music or the song needs to carry forward, right? So वहाँ पे एक differentiate obviously होता है, क्योंकि आप एक scene को या situation को mind में रख के music create करते हो. जब हम अपने खुद के singles पे काम करते हैं, just like you pointed out, independent songs, then it's completely our true expression of ourselves, what we are feeling in that moment, and we're not following a brief. I'll give you one more opportunity to give them an applause, क्योंकि crew का आपने गाना सुना, चोली के पीछे क्या है?
Again, they have recreated it. How was that like working with Diljit? So मैं जलंधर तो हाँ, मैं पंजाबी हैं, and of course every time I see Diljit, of course एक बहुत ही pride वाली feeling आती है. और आप लोगों का काम भी जो है has been impeccable, collaborating with a force like them, and you yourself are such an accomplished, artist. What was that like? What was that collab like? It was easy peasy, man. Diljit Paji was very kind. He gave us a lot of time. I think, see, the thing is, Choli ke piche and Punjabi doesn't really come naturally together. But when Akshay and I sat to recreate the track, we thought we should do something atrangi, something, that is not expected. And then once that zone was cracked, तो हमें पता था कि दिलजीत पाजी से अच्छा कोई ये कर नहीं सकता है. He came, he brought his Punjabiyat into the track, and he brought his swag into the track. It was just amazing working with him. Yeah. And how was it having Kareena Kapoor kill it in the video as well? That was, so for us it was back to back, making songs for Kareena with Kareena. Just like you mentioned Ranjana with Masaba. So that also had Kareena. And not just Kareena, the whole film, like it's a big canvas, right? You have Kareena, you have Tabu ma'am, you have Diljit, then Kriti. Yeah. It can't get better. And hats off, and I'm grateful to Mr. Taurani and Ria for actually letting us use this song for such a film. And as creators, we really crave for that relatable content. We want to be relatable. We want to go viral. Is there a secret sauce to going viral when it comes to music? Because your tracks have been on the trending list on Instagram. I don't know if I should say, sadly, that has been the parameter as well in the recent times. Of course, there are other parameters as well. But is there a secret sauce to be on that list? Just take a bath every day. There's no secret sauce. It's all hard work. It's a lot of. It involves a lot of time spent with your craft, trying to make yourself better. And yeah, there's no. मुझे लगता है मतलब थोड़ा तो खुदा आपको एक म्यूजिकल सेंस देता है, लेकिन जैसे जावेद अख्तर साहब ने एक बार बोला था कि एक तो आर्ट होती है और एक क्राफ्ट होती है. तो आर्ट की डेफिनेशन है कि कोई फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है, आपको जो करना है करो. लेकिन क्राफ्ट आपको उस मैडनेस को एक तरीका, स्ट्रक्चर देने का तरीका सिखाती है. तो क्राफ्ट पे आप काम करते रहें तो आप सब कर सकते हैं, मुझे लगता है. Did you know जेड़ा नशा इतना बड़ा ट्रैक बन जाएगा? Because again it was viral. Not only did it feature in a mainstream Hindi film, but it also went viral on the internet. अब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था. It took 2 years for that song to even become viral. 2 साल तक बस वो चल रहा था पीछे पीछे. Then it got placed in an ad, and from there, rest is history. Yeah. So we can't predict anything. If someone comes here and says कि मैंने ये सोच के बनाया था, हिट होगा, तो वो झूठ बोल रहा है. पर ऐसा होता है कि जिसको हम सोचते हैं कि ये वाला तो वायरल जाएगा, वो नहीं जाता, and then जिसके बारे में बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, that goes. Does that happen to you? Yeah. ऐसे सोच के obviously when you never done no. So obviously when we are approaching a song, हम ऐसे सोचते नहीं है कि ये क्लिक करेगा. This is going to click. And just like you said, जैसे IP ने बोला, पता नहीं था कि ये गाना चल जाएगा, right? Beat Ranjan आया, beat Ishq Mitha which we had done, which Ranbir had walked for us. हम लोग बस काम कर रहे हैं, just putting it out, and then it's the audience which takes the song ahead. और आप मुझे ऐसा लगता है एक्सपर्टीज आपकी होगी एक तरह से शादी वाले गानों की. रांझन आया इज शादी, मैरीगोल्ड प्रोजेक्ट वाज शादी, इवन लाइक शेरशाह सॉन्ग इज शादी. So, इसका हम दोनों बड़े टाइम से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से नहीं. मैं तो बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा. तो मेरी तो हो गई पिछले साल, अभी बस अक्षय बचा है. तब तक इसकी शादी नहीं होती, हम शादी वाले गाने. अक्षय कितने गाने लगेंगे शादी कराने के लिए? अभी भी चल रही है और गानों की बात शादी. But did you find love in the process of making music? Did your art help? Does art really help you in relationships, life, or other parts of? यार मेरी बीवी मुझसे भी अच्छा गाती है, तो मैं उसका फैन हो गया. So yes, art did play a role, and I fell for her talent and her beauty in that. Lovely. Now we'll also talk about tech, because there are many young students here who are intrigued by tech and of course music. बहुत कमाल चीजें हो रही हैं जब हम टेक और म्यूजिक को जोड़ते हैं. But as outsiders, we don't know what all is happening. So if you can give us an example, the way music industry or the way we create music
has been changed or transformed just because of tech? See, I would just give couple of examples. अगर वो किसी सिंगर की आवाज़ लेके हम AI से यूज़ कर रहे हैं या फिर मिक्सिंग प्रोसेस में वी यूजिंग इट टू एनहांस आवर ट्रैक्स द व्हाट आई थिंक इज़ जो आप इट्स नॉट अ थ्रेट एक ये भी क्वेश्चन आया है कि विल AI टेक ओवर ओरिजिनल म्यूजिक क्रिएशन व्हाट आई फील इज हम इसको अपने टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं अगर कुछ आपको जल्दी प्रेजेंटेशन करनी है रिक्वायरमेंट है वे यू हैव टू प्रेजेंट समथिंग या कुछ जल्दी से बना के देना है यू कैन यूज दीज टेक्निक्स टू रेफरेंस योर सॉन्ग बट एक कोई एग्जांपल दे सकते हैं किस तरीके से आप AI को इंटीग्रेट कर रहे हैं इनटू मेकिंग म्यूजिक? जैसे बहुत बार होता है कि अगर हमें एक डुएट गाना करना है राइट नाउ एंड बहुत बार क्या होता है कि टाइमलाइंस आर रियली टाइट and now we can't get a female singer, for example, to come and give us a dub. That's when you use these tips and tricks कि हाँ आपने एक female voice को emulate करके अपनी melody में डाल दिया. Wow, that's interesting. What about you? Any example that you can quote? I think the way tech has come into the music industry, it has democratized the industry. पहले आपको एक पूरा एक रिकॉर्डर सेटअप चाहिए होता था तब आप एक लाइन रिकॉर्ड करेंगे एंड द होल प्रोसेस वाज वेरी एक्सपेंसिव यू नो नाउ यू नीड अ लैपटॉप देयर आर लूप्स अवेलेबल सो इफ यू हैव द फायर इन यू यू कैन जस्ट गो आउट एंड मेक अ सॉन्ग दैट यू विश फॉर एंड जुबिन नौटियाल भाई से मैं एक बार उन्हें डब कर रहा था मैं बॉम्बे में तो मैं ही इज सो इनक्रेडिबल इन फ्रंट ऑफ द माइक एंड आई आस्क्ड हिम कि ब्रो आपने कहाँ से सीखा And then he looked at me and like, IP भाई, YouTube के ज़माने में अगर कोई कुछ सीखना चाहे ना, तो वो सीख सकता है वरना वो बहाने मार रहा है. True. So, I think so. Tech is always here to help us, and if you want to create something, you can always use tech to your advantage. Before we move on to the next segment, I also want to tell that we'll take some questions from you. So think if you have any. I mean, bring out your inquisitiveness and then we'll have those questions in front of them. I was thinking to do, since you guys have created so many wedding songs and the flavor of your music is Punjabi, can we do some like activity which is around tappe? Yeah, sure. If you permit. So what is tappe? Tappe is like a form of Punjabi folk music where it's like kind of a couplets that you sing. I'm sure you would have watched Jagjit Singh ji and Chitra ji's YouTube video. There are some head nods. So have I explained it well or do you have any other explanation of tappe? No, that's a good explanation. और टप्पो में से how many people understand Punjabi in this room? Okay. We're doing this in Delhi, of course. मैं पंजाबी हिंदी का मिक्सचर करके आपको 2 लाइन टप्पों के सुनाता हूँ. Yes. जब आपने मुझसे सवाल पूछा था कि what is the magic sauce? तो टप्पो में भी जगजीत सिंह जी ने यही बात करी है कि तुसी रोज नहाया करो, तुसी रोज नहाया करो, मक्खियों से डरते हो, गुड़ थोड़ा खाया करो, मक्खियां तो डर दे हो, गुड़ थोड़ा खाया करो. Lovely. Can I do like first part of another tappa and you complete it? Now I'll do the first part of it and he has to add a twist to it. If we can go like away from the typical answer to it. Chitta kukkad bane re te, chitta kukkad bane re te. रात हो गई काली सोनिया कर आजा मेरे ते. Lovely. One more. Let's do one more and then we'll have your questions. कोठे ते आया करो, कोठे ते आया करो, पर थोड़ा ध्यान रखियो किते डिग ना जाया करो. Love it, love it. Now we'll quickly open the floor to the audience and if you can raise your hand if you have any questions. So Akshay, You don't need to ask us questions about music, guys. You know. It's yeah, it can be anything. It can be free advice. A life advice as well. Go ahead. गुड आफ्टरनून सर. सर आजकल एक चीज़ काफ़ी नोटिस करता हूँ मैं, जो लिरिक्स की क्वालिटी है वो बहुत डिक्लाइन होती जा रही है और जनता उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रही है. तो अगर जो लिरिक्स की क्वालिटी है उसको दोबारा एनहेंस करना हो तो क्या किया जाए? एज एन ऑडियंस और एज एन आर्टिस्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ.
यार मतलब ठीक है, बहुत अच्छी लिरिक्स भी लिखी जा रही हैं. नाउ अगेन इट बॉइल्स डाउन टू द फैक्ट दैट देयर इज सो मच म्यूजिक गेटिंग मेड. बट आई अग्री विद यू कि बच्चों को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए. चीज़ें समझ, जैसे कि फिर नहीं होता है फिर होता है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो अगर हम सीखते रहें तो आपकी राइटिंग में एक क्वालिटी आ जाएगी. एंड राइटिंग इज रियली टफ, यू नो. या यू वांट टू से समथिंग? मीनिंग ऑफ सॉन्ग, क्वालिटी ऑफ द लिरिक्स. मीनिंग वही है यार. एवरीवन इज ट्राइंग टू से द सेम थिंग फॉर द लास्ट 300, 400, 500, 800 years. कहानियाँ इंसानों के इर्द गिर्द वही होती हैं, जरिए बदल जाते हैं, यू नो. सो अगेन if you say a simple thing in beautiful words, it makes the whole thing beautiful, you know. So meaning से ज़्यादा आपका क्या जरिया है, आप किस तरीके से वो चीज़ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है उस पर ध्यान दें लोग तो बेटर होगा चीज़ें. और Thank you. Let's have one more question. This gentleman has one. I'm audible? Yeah. So good evening, everyone. My question is, how do you guys deal with the creativity block? Like there are periods ki jahan like you take a pen and paper and nothing hits your brain. Like how do you deal with the frustration? Akshay, you want to take this? Yeah, we end up. What works for us at least is that you have to somehow, at times, cut off from your usual clutter. जो आपका एक routine चल रहा है, उससे आपको break लेना ही पड़ेगा. अब चाहे वो आप ट्रैवल करके लो या फिर मे बी आप वो उस गाने को वहाँ पे एक स्टॉप करके यू गो एंड रीविजिट द सॉन्ग लेटर, मे बी वर्क ऑन समथिंग एल्स, राइट. दैट इज़ वाई लॉट ऑफ आर्टिस्ट से कि हाँ हमारा एक गाना एक दिन में बन गया. एट टाइम्स जैसे हमें 1 महीना लगा या 15 दिन, 1 साल लग गया. सो दैट इज़ समथिंग विच आई फील कैन बी डेल्ट. यू जस्ट हैव टू डिटैच योर सेल्फ एंड वो अपने आप आपके पास आ ही जाएगा गाना. Lovely. Thank you so very much. Can we have a huge round of applause for both of them? आपने ट्रेलर तो देख ही लिया है इनकी आवाज का और इनके टैलेंट का, so we'll of course have the full picture now. We have a performance lined up from them, so give them a huge round of applause. The stage is all yours. Go ahead. आज जो भी है चोली के पीछे मुझ पे तू देखा रच, देखूं छुप छुप के मैं तुझे बोलूं सच सच, मचने तकी तू बेबी टू मच देखियो ना गिर जाए, रुकना नहीं फिर हाय, देखियो ना गिर जाए, जुड़ना नहीं फिर हाय, ये दिल तू दे दे अपने यार को, प्यार को दे बता तू क्या है तेरे सीने विच ना मिला है तेरा सा ज़माने विच, ले मुझे तू अपनी ही और खिच, नैना दे खजाने तेरे लुट के मैं होना रिच. दे बता तू क्या है तेरे सीने विच ना मिला है तेरा सा ज़माने विच, ले मुझे तू अपनी ही और खिच, नैना दे खजाने तेरे लुट के मैं होना रिच. थैंक यू. थैंक यू. Akshay has told me that next song you should stand and sing. So I'll stand and sing, guys. You can stand up wherever you are and we can of course vibe. This one is also Absolutely. from this this film. ज़्यादा नाचने वाला गाना नहीं है, but हम head bob या फिर हाथ हिला के ये सब तो कर ही सकते हैं. So be with us. This one is called Dar Badar. Darana darana लगे पाँव में जो चुभते से मेरे सपने हैं, सारे मुझको समेट के ये रखने हैं, किए जा रही मजाक मुझसे है जिंदगी, तरसाए बूंद बूंद ना बुझने दे तश्नगी, सुनी पड़ी मेरी तकदीरें कोई नजर ना आए, पूरी हुई नहीं तस्वीरें कोई रंग लगाए, मैं तो ढूंढ
बदर ढूंढूं दर बदर, कोई राह ना दिखाए ढूंढूं दर बदर ढूंढूं दर बदर, ना मिले घर में तो ढूंढूं दर बदर ढूंढूं दर बदर, कोई राह ना दिखाए ढूंढूं दर बदर ढूंढूं दर बदर, ना मिले घर में तो कभी अगर तू खो जो जाए तो यादें अपनी छानना, वहीं मिलेंगी तुझको घर की वो राहें जहाँ तेरा है आलना। सुनी पड़ी मेरी तकदीरें कोई नजर ना आए, पूरी हुई नहीं तस्वीरें कोई रंग लगाए, मैं तो ढूंढूं दर बदर ढूंढूं दर बदर, कोई राह ना दिखाए ढूंढूं दर बदर ढूंढूं दर बदर, न मिले घर में तो ढूंढूं दर बदर ढूंढूं दर बदर, कोई राह ना दिखाए ढूंढूं दर बदर ढूंढूं दर बदर, न मिले घर में तो Thank you very much, guys. Track to be played one more time. So, do we want it one more time? Yes? Let's hear it one more time. आ जाओ। देखो आई आज जो भी है चोली के पीछे मुझ पे तू देखा रच, देखो छुप छुप के मैं तुझे बोलूं सच सच, मचने लगी तू बेबी तू मच देखियो ना गिर जाए, झुकना नहीं फिर हाय, देखियो ना गिर जाए, जुड़ना नहीं फिर हाय, ये दिल तू दे दे अपने यार को प्यार को, दे बता तू क्या है तेरे सीने विच ना मिला है तेरा सा जमाने विच, ले मुझे तू अपनी ही और खिंच, नैना दे खजाने तेरे लुट के मैं होना रिच, दे बता तू क्या है तेरे सीने विच ना मिला है तेरा सा जमाने विच, ले मुझे तू अपनी ही और खिंच, नैना दे खजाने लेके लुट के मैं होना रिच। Thank you. Thank you so much. So once again, a huge round of applause for both of them. Thank you. Thank you so very much. And now I hand it over to my colleague, Osama. Osama, 10 number. Well, ladies and gentlemen, friends, I hope you guys had a good time because this was a fabulous, fabulous performance. A huge round of applause.
check. Thank you. Thank you. Mic on. Hello and welcome to this very interesting conversation, ladies and gentlemen. I have with me 4 people who have not just excelled in their respective fields, but they have changed the game forever. You know, these 4 people are, as we call them, the Yuva Disruptors. We have with us Rani Kohinoor. That's right. An actor, a singer. She's an internationally acclaimed performer, a recording artist. She is also a motivational speaker. With a film, Thank You for Coming, this film came out last year. She has become a part of India's first film to cast a real trans person, and that is absolutely incredible. We also have with us Dr. Tanaya Narendra, or more famously known as Dr. Cuterus. She's a sexual health educator, she's a doctor, she's a scientist, she's a best-selling author, she's everything. But more importantly, she's somebody who has literally simplified sexual health, wellness, and everything on social media without any filters. We also have Mansoor Ahmed Khan. He is the CEO and co-founder of Beethoven AI. This is a platform, ladies and gentlemen, that helps you to compose customized music for a video or a podcast. He's a 7th-generation sitar player as well. And he's also been featured on the 30 Under 30 list by the Forbes magazine. And this is absolutely phenomenal. We also have with us Mona Agarwal, competed in only her 4th international competition. She won a gold medal. She won a gold medal in women's 10-meter air rifle category at WSPA Parachuting World Cup to clinch a 2024 Paris Paralympic quota. Wonderful, wonderful. So, ladies and gentlemen, people of all gender, please give a huge round of applause for our guests who are present here. Let me start by asking you, Rani, and I would like to make a confession before coming here. My stylist, he basically said that I'm going to make you look as fabulous as Rani Kohinoor. I don't think that is happening here, guys. That is definitely not happening. But talking about this persona, and I know this is not going to be a simple answer to this question, but tell us about the journey of Rani Kohinoor, and because I believe this has multiple layers, and how did you come up with this persona, and why was it important for you? First of all, good afternoon, everyone. Namaste, namaskar, and namaste. I would like to say that it's such a pleasure to be in a room full of such talented, wonderful youth and policymakers and disruptors, as you say. So one has to realize that, you know, whenever I step out of the house, I have a lot of, how do you say it? There's a lot on my shoulders in terms of a lot of people banking on me to be the representative for them.
Now, that's quite an impossible task because one person cannot and will not ever represent an entire community. But I am a small, minuscule part of a wonderfully diverse and wonderful community that deserves as much dignity and integrity, which is promised in my constitution as a democratic nation, as a citizen of this country, a tax-paying citizen of this country, as I may add, to have as much dignity as anybody else on this stage or in this room. And so a lot of people ask me, why do you wear saris all the time? And I'll tell you one thing, when I was reborn as Rani, I chose the name Rani only because I saw so many wonderful queens while growing up. I have to give a big round of applause to Tanaya because she speaks about such wonderful issues that are not only relevant to women and men, but also trans people, are also about minorities. Absolutely. And of course, we can only learn and take from one another. So your stylist is too kind and too generous, but I must say, you look fantastic today. I don't know what he's talking about. Well, but you look gorgeous. And yes, whenever I step out of my home, as I said, that there's a lot riding on my shoulders. So my kids are here today, and I just want to say that everybody deserves education. We need to work towards an egalitarian society, regardless of gender and orientation and all these stigmas that the colonization has left us with. We need to get done with it and reclaim our fantastic fabric, our cultural ethos that speaks about oneness and unity in diversity. Absolutely wonderful. Absolutely wonderful. Thank you. I want to ask you, where did this name come from, Dr. Cuterus? I mean, she's cute, obviously, but where did this name come from? It's a very simple story. Whenever we hear about the uterus, it's like uterus को detox करना है, uterus गंदी जगह है, वहाँ से गंदा खून आ रहा है. If you think about it, everybody, no matter where you come from, no matter what class, caste, culture, creed, gender, whatever you are, सबका पहला घर uterus होता है. So why do we not rebrand it as something sort of happier, I think? And it just fit, cute uterus for me. Everybody, if you think about it, if you think about your first home, you have beautiful memories associated with it. We all want to, live in our first home forever. Maybe not the uterus, but if you think about it that way, the uterus is a very wonderful, healthy, happy place, and it needs a better PR treatment. So that's how the name came about. It was cute plus uterus is cuterus. I wanted to be a gynecologist to begin with, and that's how the name was born. When you talk about sex, especially in India, it is still one of the most taboo subjects here. It is a two-part question. A, do you feel that people now are willing to have a conversation? And B, is it because people like you decided to talk about it without any filters, like I said earlier? I don't think I'm standing on the shoulders of giants. There's people like Rani, there's people like Seema Anand, there's people like Lisa Mangaldas. Yeah, there is just so much love. There's people like Dr. Mahendra Vats who have done incredible work. So I'm just a tiny sort of speck in whatever has happened over here. But I think we've definitely grown up a lot as a country, I think, in the past 4 years. And what I've seen happening when I started doing content versus what I'm seeing right now. Now when I get hate messages or hate comments, earlier people never, nobody ever fought for me. Nobody should have to fight for me. I'm a known individual. But now people are fighting for this conversation. In my comments, if somebody writes some bad words about me, you will find 1,500 people attacking them and maybe trying to make them understand why this conversation is important. So I think that in itself is a win. I was in Delhi last, and I travel a lot by train, so I was at the train station, and I had a lot of luggage, so I was hiring a coolie, and my coolie bhaiya came to me, and he's like, "Madam, aap Dr. Cuterus hai na?" And it blew my mind. Who are doing this good work for all of us. So a huge round of applause for Rani Kohinoor, Dr. Cuterus, ladies and gentlemen. Talking about something else, talking about artificial intelligence. AI, as we speak, it is changing the game. We see AI everywhere now. And you, with your company, Beethoven AI, it is right at the forefront of
when it comes to the music industry. How has AI generated content, changed the scene for the content creators? Yeah, I think I can tell it from the side of a product person who's building it, right? I think content creators, much better to ask them because they create content. But my perspective is like it's mainly about efficiency and speed of delivering your content. I mean it's still not quite yet there to be completely used as a technology for end-to-end automation of your content creation, but it is an assistive technology where parts which would require you to go out there and shoot. Maybe if you could use a video generator to fill in those gaps and then speed up your entire process of what would take you 2 to 3 days to publish, maybe 2 to 3 hours to publish. That would just give you as a content creator the power to publish more content, and it's all about it's a chance based thing, right? Like you publish more content, the likelihood of something getting picked up goes higher. So that's basically where it's playing a role right now, the way I see it. And secondly, yeah, I mean also people are getting creative with this technology. We can talk about what we do at Beethoven. So it's a music creation tool, and we have seen people who never created music use this tool and start creating music, right? So in some sense, democratizing, creation, and people are excited about it. People are getting to do things they weren't able to do in the past. Let's ask the creators only. Would you be using AI to include that in your work? Yes, please. Please. Yes, please. All right. I mean, thank you, first of all, on behalf of all of us, because you've made life easier, and especially for technologically challenged people like myself, whose only prowess is to hold the mic and sing. After that, I don't know, फिर वो भगवान भरोसे हो जाता है ना, आप की पकड़ लीजिए फिर, और फिर बजा लीजिए कुछ भी जो भी है, फिर हम गा लेंगे, ऐसा होता है. But then, as you said, when you democratize, entire, how do you say, professions or vocations, and you give that chance for people to decide what they want to make, that is the biggest gift that you give to people and creators. So thank you. Lovely. We also have Mona Agarwal with us. There is, whatever that we say about her is going to be less. The amount of recognition that she has achieved in the past 5 years, 7 years, 10 years, it is never going to be enough. It is never, it is like for people like us who have always dreamed of, going out there and winning a medal for India, winning something for the country. I think she's a living example of that. So huge round of applause for Mona Agarwal, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you. मोना, सबसे पहले आप अपने जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, बिकॉज कई सारे ऐसे लोग हैं जो स्पोर्ट्स फॉलो करते हैं, स्पेशली पैरा स्पोर्ट्स जो फॉलो करते हैं, वो आपके बारे में डेफिनेटली जानते हैं, बट वो लोग जिनको आप अपने बारे में बताना चाहती हैं, वो क्या बताएंगे, किस तरह से आप स्पोर्ट्स में आईं और किस चीज़ ने आपको मोटिवेट किया स्पोर्ट्स में आने के लिए? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि पैरा स्पोर्ट्स को हम सभी को आपने मतलब अपने साथ यहाँ पे सम्मानित किया, जगह दी बराबर में, उसके लिए थैंक यू. मैं मतलब एक बेसिक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और जैसे एक होता है ना, अभी जैसे मैम ने बताया कि यूट्रस इज़ द फर्स्ट होम, तो हमें वहाँ नहीं पता होता है कि अंदर बॉय है या गर्ल चाइल्ड है, या एबल बॉडी चाइल्ड है या डिसेबल बॉडी चाइल्ड है. तो जब हम बाहर आते हैं, दुनिया का सामना करते हैं, तो एक गर्ल चाइल्ड जब जिसके पास मतलब ऑलरेडी फैमिली के अंदर इट इज़ लाइक 1980s के अंदर था मेरा बर्थ, तो उस समय मेरी 2 बड़ी बहनें थी, मतलब मैं 3rd गर्ल चाइल्ड थी, तो एक तरह से मैं अनवांटेड गर्ल चाइल्ड थी. तो सबका अटेंशन वैसे ही मुझ पर से कम हो गया. फिर उसके बाद में पता चला 9 मंथ के बाद में मुझे पोलियो ड्रॉप्स रिएक्शन हो गए, तो और ज़्यादा थोड़ा सा फैमिली के लिए टेंशन वाला टॉपिक था कि इसे कैसे बड़ा करेंगे, इसके लिए किसके नहीं, मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ. तो मैं झगड़ा करके घर से आई, फिर मैंने छोटी मोटी जॉब की, जॉब करके अपना अर्निंग सोर्स किया, और फिर क्योंकि नॉलेज उस समय इतना नहीं था कि हमारे लिए भी गेम्स हो सकते हैं,
तो मैंने मेरा फर्स्ट स्पोर्ट्स जो है वो स्टार्ट किया था एट द एज ऑफ 29। तो उसमें भी फिर हमारे साथ और बहुत सारी प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट लाइक कि जैसे सब लोग, मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं क्रिकेट नहीं खेल सकती, तो ऐसा नहीं है कि मैं मेरी हॉबी के अकॉर्डिंग अपना गेम सिलेक्ट करूं, मुझे मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग गेम सिलेक्ट करना है। तो मैंने मल्टीपल गेम्स खेले, फिर उसके अकॉर्डिंग मुझे देखना पड़ा कि मेरा बॉडी किस गेम को सपोर्ट करेगा या कौन सा गेम मेरे बॉडी के अकॉर्डिंग सपोर्टिव है। तो ऐसे करके 3 और 4 गेम्स के बाद जाके मैंने शूटिंग स्टार्ट किया एंड इट टुक 5 years टू अंडरस्टैंड कि मेरी बॉडी के लिए कौन सा गेम परफेक्ट है। तो मैंने दिसंबर 2021 के अंदर शूटिंग स्टार्ट किया था। राइफ़ल मैंने सिलेक्ट किया एंड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि एक व्हीलचेयर बाउंड के लिए राइफ़ल और उसके सारे इक्विपमेंट्स कैरी करना और उनके साथ ट्रैवल करना, तो मुझे हर बार मतलब मेरे साथ एक असिस्टेंट चाहिए रहता है। तो इस 2 साल की जर्नी में मैंने अभी मार्च में 4th इंटरनेशनल खेला था एंड आई गॉट द पेरिस टिकट। तो आई एम हैप्पी कि मेरी ग्रैंड मदर ने जो इनिशिएटिव लिया या उन्होंने मेरे ऊपर जो भी वर्क किया, मुझे जो भी सिखाया, उसे मैं अपनी लाइफ में सक्सेस कर पाई। मोना ने कहा कि हमने उन्हें जगह दी है, वो हमने जगह बिल्कुल नहीं दी है, वो जगह डिजर्व करती हैं यहाँ पे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट representation and it is important. I want to ask you this question. I was listening to this interview by Denzel Washington. He talks about and he was asked this question where the interviewer asks why is a black person directing that particular movie. I don't remember the name of the movie, but his answer is something that struck with me. He said that it is when a hot comb hits your hair on a Sunday afternoon, he's talking about a black person, the smell of that hair is not something, it's not about race, it is about culture. And is that the same when it comes to the trans community as well? Because a lot of times we don't talk about culture in that sense. I think right from the get-go, you know, when you welcome at an event and you say, ladies and gentlemen, and I'm excluded right there. So I'm now, of course, I've developed thick skin because I say that I am the ladies and I am the gentleman. Sometimes I have to be, right? But the thing is that, but you know, English and Hindi is such a functional language, more than English, I would say, and most of our regional languages are. तो हम सबको मतलब किसी भी स्थान पे सभी को वेलकम कर सकते हैं by saying welcome everyone to this wonderful event. You don't have to put gender in the binaries because, and I say this from a very Indian perspective, from a very Indian cultural perspective, because nowadays if you see, there are these very young people on the internet, okay, and of course I have, my niece is 13, so you know, around that age, 14, 15, and they have been influenced by by some sort of, I'll tell you what, so a lot of people are like, what is this Western disease? What disease? I pay a lot of tax, man. I don't get any rebate for being transgender. You know, there's nothing of the sort. But one more thing is, the transgender, being transgender or you know, homosexuality or bisexuality or sexuality in general is not a foreign concept. Homophobia is. So we did not create sections that you know, were derogatory towards women. We did not create sections in our constitution that, you know, questioned somebody's identity and gender and, you know, did not give them jobs. So many of my sisters, you'll see, you know, a lot of people are used to seeing people, when I hold the mic and speak in English, baap re, ye to baap re, kitna English mein baat karti hai. Yes, because it should be normalized that a transgender person can be educated and a productive member of society. So yes, there has to be representation in every field, whether it is the arts, whether it's politics, whether it's education, healthcare, and whether it's sports, whether it's music. And I think it's extremely, it's our duty to teach our kids, you know, because if you let them be and you tell them, okay, fine, you know, it's not affecting us, they're the minority, so it's okay to make fun of them. Because suddenly when you speak about religion and faith, we pick up the sports. But if you make fun of my gender, I've not seen many people showing that much enthusiasm. And every life, according to, again, my country, and
Ambedkar Sahab, it was said that, you know, everybody deserves a life of respect. That is their birthright. So I should not be denied that just because of my gender. I mean, there are so many kids that I take care of. I don't have to. I take care of because I love them, and they give me वो औदा वो मुझे माँ का औदा वो देते हैं. And through my foundation, I have been able to, you know, be there and help so many kids. But I would say that they are the ones that help me. They have made me a mother. The name of the foundation is You're Not Alone. The name of my foundation is Yana Foundation, which is YANA, means you are not alone. Because a lot of kids growing up, we have also felt so excluded in so many areas, whether it is our body type, whether it's our skin color, whether it is our hair type, whether it's our nails, whether it's the way we speak. You know, I'm quite a South Indian at heart, okay? So we have roots in Kashmir, but you know, also, it's basically national integration, my family tree. Okay, so everyone has met everyone, and here I am the product of it. So I used to have a very heavy South Indian Konkani accent, and so I used to be made fun of that also. Now there were so many intersections that you're made fun of everything. These kids, every child deserves love and unconditional love. Not कि तुम ऐसा करो फिर मैं तुमको प्यार दूंगी. And I think that they have made me a better mother. I would just say that, you know. And motherhood is not the act of giving birth. Motherhood is giving love. It's a behavior, it's an emotion. Wow. And I think that I'm just happy and proud that I can be a mother to such wonderful kids. Lovely. I also want to talk about the audience that you are catering to. And correct me if I'm wrong, but there is a niche audience that you are catering to, an audience that speaks in a certain language, that comes from cities, etc., which has access to technology. Does it make your work easier in that sense, or and how can you have? How does one have a conversation with somebody who doesn't have any access to all of this? It's a heavy question. So I have a very. Is this on? Yeah, okay. I have a very split audience where on my Instagram I have like a urban English speaking audience. On my YouTube it's mostly UP Bihar people who I have to speak to in a certain different way versus the people I speak to on Instagram where I have to speak to in a certain different way. I think the onus lies on all of us to kind of initiate that change and to challenge the norms that are held up. I'm trying to do it in 2 languages because I'm bilingual, but so many of us are trilingual and quadrilingual. We can go into those spaces. You can use your influence and change the world. Everybody can change the world in their own way, and we should step out and try to do that. I don't know if it answers the larger question at heart, that if it, changes anything, but in medicine, I'm a practicing doctor, so in medicine we have a concept called FOMED, which is free open access to medical education. Because medicine is such a closed off hierarchical space, the education and the awareness we get over there doesn't really necessarily translate into the real world unless you're going to a doctor. I try to use the internet, Jio har gaon mein pahunch chuka hai, to kind of tap into the availability of the internet. Everybody has a cell phone. घर में एक फ़ोन सबके यहाँ होता है, घर में एक इंटरनेट कनेक्शन सबके यहाँ होता है. Even people who are not from say a higher socio-economic strata, हर जगह पहुँच चुका है. And the best thing about using the internet and apps like Instagram and YouTube is that there is no barrier. The barrier to entry is very low. कोई भी जाके देख सकता है, हर कोई अपनी फ़ोटो लगा के देखना चाहता है कि मेरी फ़ोटो पे भी कमेंट करे, मेरी फ़ोटो पे भी फ़िल्टर लगे. That's why I try to use this. I don't know if it's the best approach, but जितने भी approach है मैं सब try कर चुकी हूँ. Podcasting, YouTube, Instagram, किताब. But what would you tell people who are present here, the young people here, if at all they want to have a conversation, which they should, if they want to have a conversation within their families, how do they go about it? घर में जाके पीरियड चलाना शुरू कर दो. I'm telling you, it is that easy. It is that difficult as well. So think about it. When we teach young people about their bodies, हम उनको बताते हैं ये आँखें हैं, ये नाक है, ये मुंह है, ये शेम है. ये शेम क्यों है? क्या शेम है इसमें? ये बॉडी का पार्ट नहीं है क्या?
इसमें क्यों शेम छुपी है? हम सब यहीं से निकले हैं यार. अगर आप सिजेरियन से भी पैदा हुए हो तो उस जनरल एरिया से ही निकले हो, तो ये शेम क्यों है? And we need to challenge it from the get-go. I'm a very big fan of age-appropriate sex education. मैं sex education में नहीं बोलती, लोगों का skin crawl करने लगता है ये शब्द सुन के. I say body literacy. So age-appropriate body literacy सबके साथ होनी चाहिए. And you know, speak to the young people in your household. अगर घर वाले चप्पल मार रहे हैं तो उनसे मत बात करो, छोटे वालों से बात करो. Change the coming generation. And वो बदलेगी तो पीछे वालों will be forced to बदलो. मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दीजिए कि उनके पास कोई ऑप्शन ही ना हो इसके अलावा बात करने के अलावा. थोड़ा रैडिकल चेंज, बट ऑल्सो जस्ट टॉक अबाउट your body. I did a workshop with some older women in the US, and these were all women in their 60s, 70s who've all, you know, lived their life. They're living in America. And workshop के बाद मैंने end में एक काम कराया. I said we will all get together and we'll say the word vagina 3 times. Vagina, vagina, vagina. Can we try this? I would love to. इसमें कोई भारी शर्म की बात नहीं है. Can we do that? Can we do that? 3, 2, 1, vagina. 3, 2, 1, vagina. सब जोर से बोलो यार. This needs to be louder, guys. Vagina. So this is what I do at the end of most of my workshops to take away some of that shame. And in this particular workshop, one lady came to me. She must have been in her late 60s. She's given birth to 4 children. And she came to me crying. She said, मैंने ये शब्द कभी बोला ही नहीं अपने जीवन में. A woman who has given birth to 4 children from that very vagina has never said the word vagina. Can you imagine going through your life without saying the word elbow? जिंदगी भर बोला ही नहीं है. Right. And that is the reality of a lot of people. So just speak, just do it. Nike का slogan, but do it. One final word from Mansoor and Mona. What is your message to this young audience who's here? And what would be your message when it comes to technology and when it comes to sports? What would you tell these young people about your profession that they can use if they want to get into that space? That's a great question. I feel like at the point we are at right now in society, like technology is going through such a rapid evolution. Especially with AI and all of these new technologies. But one thing that I would like to say is like for me what worked is I tried to connect my background with my career. So for example, like I come from a family of musicians. My family has been in music for 7 generations, and I learned music, and then I tried to translate my passion into my career. So I was also into tech, so I thought like, okay, can I find a space that lies at the intersection of music and tech? And that was how, I got into this space, and I ended up creating this company in AI music. But of course, that's not something that will work for everyone, but what my perspective is like, everyone has that one core skill that they're really good at, and I think you should just harness that and keep improving that over a period of time. I don't think any AI also can replace you at that, if you're really good at that skill. Yeah. Lovely. मोना, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे इस जनता को, इस यंग क्राउड को जो से फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? स्पोर्ट्स को एज अ करियर अगर आप सिलेक्ट करते हैं दैट इज़ योर चॉइस, बट हम सब बचपन से लेकर जैसे छोटे से बड़े हुए हैं, तो हम सब छोटे में बचपन में कुछ ना कुछ गेम खेलते थे. किसी ने सांप सीढ़ी खेला होगा, लूडो खेला होगा, और कई सारे अपने गेम्स खेले होंगे. तो खेलना मत छोड़िए, उसे एज अ हॉबी से लेकर अगर आप एज अ प्रोफेशन में भी डालते हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपके माइंड के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है. तो आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं तो आप फिट हैं, हेल्दी हैं, बॉडी से भी माइंड से भी, तो खेलते रहना चाहिए. लवली. बट बिफोर वी रैप दिस सेशन, आई वुड because we have Rani Kohinoor here, and everyone, they're dying to listen to your voice. Look at that excitement, man. Please don't go by her. She's like my sister. We are all her biggest fan. Every one of us, every single one of us. And I've told her multiple times. So can we have a little small? इतना मस्का लगाता है. Well. Huh? पहले बोलता you look gorgeous, then you say like, oh God, she sounds gorgeous. But that's also because we are such huge fans. ज़्यादा, yeah, but yeah, don't hit on me too much. I'm dating finally dating someone.